Pravina ma'am, can you hear me? ते मोबाईल ते बना Oh, yes sir, there are around 50 participants. We'll just wait for 5-10 minutes. no problem, sir. Sure, sure. I thought I'll just do a sound check. This is why all set. Hello, sir. थोडं तिकडे बसा. हम्म.
Good afternoon, everyone. I hope सगळे join झालेले आहेत. So I, Srushti Sridhar Atigre, Vikasa Joint Secretary, on behalf of Kolhapur WIRC, Vikasa Kolhapur, Sangli, Satara, Dhule, Ichalkaranji, I welcome our today's chief guest, CA Pinky Kedia ma'am, CA Rudesh Pankhania sir, our Kolhapur branch chairman Ashish sir, Vikasa chairman Nitin sir, and other committee members and all students on this webinar, how to face CA exams. Without losing much time, I request our Vikasa vice chairman Sania to introduce our first guest, CA Pinky Kedia ma'am, and give us brief information about today's seminar. Good evening, everyone. I am Sania Santani, Vikasa Kolhapur, Vice Chairman. We have organized this semester webinar to help students appearing in upcoming CA exam. This will benefit students to score better by presenting the answers appropriately in the paper and avoid mistakes that are usually being done by the students in paper, management of time during the exam, and how to cover the syllabus, including the MTPs and RTPs. So now, in this regard, I introduce our guest, CA Pinky Kedia ma'am, chairperson of WIRC. She is a chartered accountant and has done LLB from Mumbai University. She is a founder partner of Mrs. Kedia Singhania and Company. Pinky Kedia ma'am is regional council member of Western India Regional Council of Institute of Chartered Accountants of India. She is chairman of Capital Market and Investor Grievance Committee and Public Relation Committee. She was a member of Women Empowerment Committee of WIRC. Apart from this, she is also involved in social and cultural activities. Now, I request our chairperson of WIRC to interact with students and share us with their valuable knowledge. Thank you. Thank you, all Vikasa branches, to invite me to motivate the kids for CA exams. I welcome my council colleague CA Rudesh Pankhania for today's webinar. And I think, and I hope the Rudesh is the best person to motivate the students, CA students. Even he is motivating me also. So he is the very best person. And I want to congratulate all the branches who have jointly made this effort to make this webinar happen for the benefit of the CA student. I want to say some points that what CA students should follow, and I want to share some tips. I know this will guide you more better, but if I want to say something, then I will say that students should visualize success. So imagine yourself that you are acing the exams and achieving your desired outcome. So visualize, they say when I was doing elections, my election day, one person told me, write CA in front of your wall, or write RCM in front of your wall. So what is your future plan, what you want to be, you should write and paste on your wall in front of you. तो जो बार बार आप उसको देखोगे ना, उसको विजुलाइज करो कि मैं सीए बन गया या मैं सीए बन गई, तो वो चीजें जब जो सोचते हैं वैसा होने की चांसेस ज्यादा हो जाती है. तो विजुलाइज योर सक्सेस दैट यू हैड become CA. And second thing is make plans or just a second. Sorry, my phone, my battery was down. Actually, I want to tell you that you all should make the plans and set the realistic goals. Means
आपको जितना पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं, वो सब एक एक सब्जेक्ट में आपके कितना टाइम लगने वाला है, कौन से टॉपिक में आपको ज्यादा टाइम लगने वाला है, उस हिसाब से देख के आप अपना प्लान सेट करिए, अपना डे वाइज रूटीन बनाइए कि मुझे इस दिन ये पढ़ना है, और बैक पीछे से चलिए। जैसे आपके यदि 2 मई से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, 1 मई को आपको पढ़ना नहीं है, देन यू हैव टिल 30th अप्रैल यू कैन मेक योर प्लान्स और योर रूटीन। सो 30th अप्रैल से बैक चलते जाइए कि आपको एक एक सब्जेक्ट के लिए कितने दिन लगने वाले हैं, एंड हाउ मच आवर यू कैन स्पेंड ऑन स्टडी इन ए वीक। सब लोगों का अलग अलग पैटर्न होता है, कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है, बट वी शुड नॉट फॉलो कि अरे हृदय तो दिन में पढ़ता है तो मैं भी दिन में पढ़ूं। आई एम नाइट पर्सन, आई कांट रीड इन डे टाइम। तो यदि मैं उसको फॉलो करने जाऊंगी कि नहीं हृदय तो दिन में पढ़ता है तो मैं भी दिन में पढ़ूं, तो उसकी वजह से मेरा भी दिन बर्बाद हो जाएगा। आई विल नॉट बी एबल टू स्टडी एंड आई विल नॉट बी एबल टू स्लीप, तो वो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। सो आपके खुद के नेचर के हिसाब से, खुद के बॉडी पैटर्न के हिसाब से, खुद के बॉडी क्लॉक के हिसाब से आपको अपनी रूटीन बनानी है, ठीक है। दूसरे को फॉलो नहीं करना है इस चीज के लिए। हाँ, दूसरे को फॉलो करना है मोटिवेशन के लिए कि हाँ भाई वो इतना पढ़ रहा है, देन आई शुड ऑल्सो रीड दैट मच, बट अपना बॉडी क्लॉक और अपना टाइम खुद देखना है आपको। एंड थर्ड वन इज स्टे ऑर्गेनाइज। आप अपना पूरा ऑर्गेनाइज रखिए कि हाँ मुझे ये करना है तो करना है। प्लस आपकी जो बुक्स वगैरह, आई सॉ मैनी टाइम्स कि मेरे घर में भी मैं देखती हूँ बच्चे जब एग्जाम के टाइम पढ़ते हैं तो 2 बुक इधर रखिए, 2 बुक इधर रखिए, फिर बाद में वो बुक ढूंढते ही रहते हैं, नोट्स ढूंढते ही रहते हैं, टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है कि वो कहाँ लिखा था। तो स्टे ऑर्गेनाइज कि जहां हम बुक रखते हैं वहीं पर हम रखेंगे। 1 मिनट उस समय ज्यादा लगेगा, बट बाद में आपको उसको ढूंढने का टाइम बचेगा। और जब वो चीज नहीं मिलती है ना एग्जाम के टाइम में, तो हम बहुत पैनिक हो जाते हैं, अरे वो नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, कैसे होगा, उसी में से कुछ आ गया तो बी ऑर्गेनाइज कि जहां पर जो मैंने पेपर रखे, बुक्स रखी है, वहीं पर ही रखनी है, सब पूरे घर में नहीं बिखरा के रखनी है, ठीक है। एंड देन यदि आपको कहीं भी गाइडेंस या सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स, योर मेंटोर, या हम लोगों से भी किसी से आप लोग शेयर कर सकते हो, आप पूछ सकते हो। यदि कहीं भी आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ रही है, कहीं भी आप डिमोटिवेट हो रहे हो या लग रहा है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, यू कैन कॉल एनी RCM with you which you are comfortable, with whom you are comfortable। हृदय से आप बात कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो, प्रवीणा मैडम इज ऑल्सो देयर टू गाइड यू एंड टू मेंटर यू। तो आपके खुद की ब्रांच में भी जो भी आपके ब्रांच पर के कमिटी मेंबर हैं, जो भी आपके सीनियर हैं, उनसे आप बात करो। अपने मन में कुछ भी कंफ्यूजन लेके मत चलना कि क्या करना है नहीं करना है, कहीं कुछ भी हो ना, किसी सबसे शेयर करिए। मन हल्का होगा ना तो ही आप पढ़ाई कर पाओगे। देन फिर सबसे जरूरी एग्जाम पैटर्न समझो कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम का मोस्टली क्या होता है, सब हम जो भी, मैं ये नहीं बोलती कि प्राइवेट ट्यूशन आप कर रहे हो या कोचिंग क्लासेस कर रहे हो, दे आर रॉन्ग, दे आर गुड, दे आर डूइंग फॉर बेस्ट कि आप लोग CA क्लियर कर लो, बट सिर्फ आप उनके नोट्स पे डिपेंडेंट मत रहो। CA इंस्टीट्यूट की जो स्टडी मटेरियल है वो आप उनसे पढ़ो, वो एक बार तो पढ़ो जरूर से। हमने भी यहाँ CA इंस्टीट्यूट में भी जिन्होंने स्टडी मटेरियल बनाया है उसमें काफी एफर्ट दिया है, तो कुछ अच्छा सोच के ही बनाया है। सो आप लोग उसको खाली सिर्फ कि हाँ आ गया है, हमने पैसे भरे हैं, इंस्टीट्यूट वाले ने भेज दिया है और आपने उसके खोल के भी नहीं देखा, ऐसे साइड में रख दिया कि नहीं हम तो सिर्फ प्राइवेट ट्यूशन के या कोचिंग क्लासेस की नोट से पढ़ के हो जाएगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। आई एम नॉट सेइंग नॉट पॉसिबल, बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। You should read once study material provided by our institute। आपको उसमें बहुत सारी चीजों की क्लियरिटी आएगी, ठीक है। तो आप उसको एक बार उसको जरूर से पढ़ना है आपको। देन अब फोकस ऑन द फंडामेंटल्स, ठीक है। आप कोई भी चीजें पढ़ रहे हो ऊपर ऊपर से मत पढ़ो, उसके बेस में क्या है, उसका लॉजिक क्या है, वो क्यों ऐसे बना है, वो समझने की कोशिश करो। बिकॉज नाउ ए डेज द क्वेश्चन पेपर विल कम ऑन अ प्रैक्टिकल सिनेरियो, केस लॉज एंड ऑल दैट। सो यदि आप रट्टा मार के जाओगे तो CA नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप यदि लॉजिकली या वो फंडामेंटल क्यों बना है, अभी नेटवर्क का ही जैसे फार्मूला है, अभी आप लोग रट्टा मार के जाओगे कि नेटवर्क मतलब हमें तो ये इक्वेशन बताया है
तो नहीं होगा. यू शुड फिगर आउट एंड एक विजुलाइज करो कि बैलेंस शीट, आपने यदि बैलेंस शीट प्रैक्टिकली देखी होगी तो, कि बैलेंस शीट में करंट एसेट्स कहाँ होती है, करंट लायबिलिटी कहाँ होती है. तो यदि वो कहीं भी थोड़े भी ट्रिकी क्वेश्चन देंगे तो यू कैन फिगर आउट कि नेटवर्क कैसे निकलेगी. ऐसा नहीं हो कि a प्लस बी इक्वल टू सी होता है बट b माइनस सी करने से a होता है, ये हमें नहीं पता. ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी आप लोग, फंडामेंटल क्या है उसका, एंड आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस भी पढ़िए. और मार्किंग स्कीम, बहुत बार बच्चे एग्जाम का जब रिजल्ट आता है देन दे आर सेइंग अरे हमारे तो मार्क्स काट दिए, हमें तो मार्क्स दिया ही नहीं उन्होंने, हमने तो पूरा लिखा था फिर भी टीचर ने नहीं दिया. भैया कोई भी एग्जामिनर या चेकर की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, एंड इवन दे डिडंट नो कि इसकी कॉपी चेक कर रहे हैं. ठीक है, आप लोगों को यदि नहीं पता हो तो एग्जाम का चेकिंग सिस्टम, मार्किंग सिस्टम ऐसा होता है. अब मैं जस्ट ब्रीफ में बता रही हूँ. रिदेश, आई एम टेकिंग 2-3 मिनट्स. तो उसमें ऐसा होता है कि ऑनलाइन अभी सारी चीज पेपर ऑनलाइन होते हैं चेकिंग. ठीक है, पहले जाती थी पूरे पूरे बंडल भर के एग्जामिनर के पास जाते थे कॉपी चेक होने, बट नाउ इट इज इट्स गोन. कॉपियां सारी आंसर बुक स्कैन होके जो भी एग्जामिनर रहता है उनके लैपटॉप में इवन उनके ही लॉगिन से खुलेगा, एंड वो फेस डिटेक्शन से खुलता है. ऐसा नहीं कि मैंने हृदय को दे दिया भैया मेरे बदले तू चेक कर दे, ही कांट डू. मेरा जब तक वो फेस आइडेंटिफाई नहीं करेगा तब तक वो आंसर बुक नहीं खुलेगी मेरे लैपटॉप पे. और मैं दूसरे लैपटॉप पे भी खोलने जाऊंगी तो नहीं खुलेगा, क्योंकि जिस लैपटॉप पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है आई कैन एग्जामिन योर बुक्स इन दैट लैपटॉप ओनली. ठीक है, तो एक तो ये सिक्योरिटी दी हुई है. दूसरी सिक्योरिटी है कि मार्किंग सिस्टम में यदि मैंने कहीं भी मार्क्स देना छोड़ दिया वो वहां से आगे बढ़ेगा नहीं, वो पॉपअप हो जाएगा कि यहाँ पर आपने मार्क्स नहीं दिया है. ठीक है. थर्ड, आप लोगों को पता है आप लोगों को कि जब आप लोगों को जब आंसर बुक मिलती है ऊपर में एक नंबर प्रिंट किया हुआ रहता है, रोल नंबर जो आपका रहता है. बट जब कॉपी एग्जामिनर के पास आती है तो वो रोल नंबर वाली स्लिप को फाड़ दिया जाता है. एग्जामिनर के एक अंदर अलग रैंडम नंबर से आपकी बुक्स मिलती है. ठीक है, तो उसको ये पता ही नहीं होता कि वो किसकी बुक चेक कर रहा है. इवन हृदय, यदि मैं एग्जाम दूंगी तो भी हृदय को पता नहीं चलेगा कि वो मेरी बुक चेक कर रहा है, या मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरी हृदय की बुक चेक करी, क्योंकि कहीं भी नाम भी नहीं होता, रोल नंबर भी नहीं होता, रैंडम नंबर लिख के आते हैं बुक्स में. तो कहीं भी ये है ही नहीं कि एग्जामिनर आपको गलत चेक करे कॉपी को, दूसरा आंसर बुक को. दूसरा ये है कि जो हम एक एग्जामिनर चेक करता है उसकी रिव्यू भी होती है दूसरे एग्जामिनर से, हेड एग्जामिनर भी उसमें से रिव्यू करता है. तो मार्किंग सिस्टम के हिसाब से ही हमें मार्क्स देने होते हैं. ऐसा नहीं होता है कि किसी क्वेश्चन में 10 मार्क्स देने हैं और आपने पूरा लिखा है तो भी हम 5 मार्क्स दे रहे हैं. बहुत जो प्रैक्टिकल्स पेपर्स होते हैं उसमें स्टेप वाइज मार्किंग होती है. तो आपने यदि शुरू के स्टेप गलत कर दिए तो आपके पूरे मार्क्स चले जाते हैं. ठीक है, और यदि आपने आधे क्वेश्चन तक आपने स्टेप सही किए तो आपको आधे क्वेश्चन तक में जितनी मार्किंग हमें उन लोगों को प्रिस्क्राइब की हुई है पूरा फॉर्मेट होता है, उसके हिसाब से वो आपको मार्क्स दे देते हैं. ठीक है, तो आप ये मार्किंग क्राइटेरिया समझिए, सिलेबस समझिए, एग्जाम का पैटर्न समझिए, और पिछले मैं तो बोलूंगी 10 टर्म्स के आप आरटीपी सॉल्व करो खुद से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितनी आपने प्रिपरेशन हुई है. टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है आप लोगों को, एंड प्लीज बी अवे फ्रॉम सोशल मीडिया. आप वो जो दिन भर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चलता है, दिन भर रील देख, रात को बैठ के यदि कोई का आंसर देखने बैठते होंगे, एक बार रील आ गई तो निकलते निकलते 2 घंटे 3 घंटे कब निकल जाते पता नहीं चलता. तो प्लीज बी अवॉइड द सोशल मीडिया. वो एक बार उसकी लत लग गई तो बहुत खराब है. इवन वो मैं बोलूंगी कि सिगरेट स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से भी ज्यादा खराब है सोशल मीडिया की आदत लगना, हैबिट लगना. तो अपना टाइम पूरा मैनेज करिए, सोशल मीडिया पे वेस्ट मत करो अपना टाइम. पढ़ाई के ऊपर अपना फोकस रखिए, अपडेटेड रहिए कि यदि कोई भी लेटेस्ट चेंजेज आया है तो आपके ग्रुप, जो आपके फ्रेंड्स के ग्रुप बने हुए हैं उनमें आपस में एक दूसरे को अपडेट कीजिए. अपने को खुद को मोटिवेट रखिए कि क्यों नहीं कर सकते हम. जब 1 लाख सीए, कितने 4 लाख 5 लाख सीए हैं हम लोग, 4.5 लाख सीए होंगे अभी, है ना हृदय? 4.5 लाख सीए है ना? 3.5, 3.7.
है ना। तो जब इतने सीए हम ऑलरेडी हैं, तो ये अपने आप को मोटिवेट रखिए कि जब और इतने इतने सीए तो हम क्यों नहीं हो सकते, जब उन्होंने सीए पास किया तो हम क्यों नहीं सीए पास कर सकते, करेक्ट। तो यू शुड मोटिवेट रखिए अपने आप को, गोल सेट करिए। एंड सबसे फॉरमोस्ट पॉइंट, जो एज ए मदर, एज ए सिस्टर, एज ए वेल विशर, एज ए योर फ्रेंड, आई एम सेइंग कि अपने आप को टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, get enough rest, exercise regularly and eat a healthy diet. क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब हम पढ़ने बैठते हैं तब हम पढ़ने के टाइम में हम खाना पीना छोड़ देते हैं, ठीक है। हम खाना पीना जो छोड़ देते हैं उसकी वजह से क्या होता है, हमारी हेल्थ डिटेरियोरेट हो जाती है, हमारा माइंड काम करना कम कर देता है, और हम सोच ही नहीं पाते कि हम कितना जो भी पढ़ रहे हैं, हमें मेमोरी पावर हमारी कम होती जाती है, ठीक है। तो यू शुड मोटिवेट यू शुड कीप हेल्दी योरसेल्फ। आप एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करने से वो पूरी बॉडी में एनर्जी आती है, एक्सरसाइज से टाइम वेस्ट नहीं होता। कई बार हमें ये लगता है कि हम एक्सरसाइज करेंगे उतना टाइम मेरा वेस्ट हो जाएगा, नहीं, एक्सरसाइज से टाइम वेस्ट नहीं होता, बल्कि आप फिजिकली और मेंटली फिट हो जाते हो और ज्यादा एक्टिव होने के लिए और ज्यादा स्टडी करने के लिए। तो अपने आप एक्सरसाइज रोज करिए, और खाना टाइम से खाओ, खाना अवॉइड मत करो, खाना स्किप मत करो। आपको कई बार लगता होगा कि अरे बैठ बैठ के पढ़ रहे हैं तो मोटे हो जाएंगे, वेट गेन हो जाएगा, ठीक है ना, एग्जाम खत्म होगा उसके बाद में हम वापस से पतले हो जाएंगे, वापस से हम खाना वो कर लेंगे। बट ट्राई टू ईट हेल्दी फूड, ठीक है। हैवी फूड मत खाओ कि जिससे आपको नींद आए, फ्रूट्स खाओ, सलाद खाओ, जो भी हेल्दी फूड है जिससे जो भी आपको अच्छा लगता हो। थोड़ा ये ऑयली फूड्स, फ्राइड फूड्स, ये सब थोड़े अवॉइड करो, जिससे आपका दिमाग ठीक से चले और आप ज्यादा स्टडी कर पाओ। तो ये थोड़ी बहुत टिप्स मेरे तरफ से थी आप लोगों के लिए। सो रिमेम्बर, एग्जाम सक्सेस कम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, consistent effort and hard work. So by following the tips, you can stay motivated and achieve your goals. So good luck with your exams. And I again wish you all कि आप सब कोई CA बन के हमारी fraternity में हमें ज्वाइन करो। And thank you for all the branches, Rishikesh, Praveena Madam, and Kolhapur branch, Satara branch, Sangli branch, all the branch. Thank you for inviting me for this webinar. Thank you, and over to you. Thank you so much, ma'am. And we will definitely keep this in your tip. We will keep this in our mind. Now, I request our Vikasa chairman, CA Nitin sir, to introduce our second guest, CA Riddhesh Pankhania sir. Thank you, Srushti. Thank you, Pinky Madam, for throwing the light on the CA course examination and its preparation. Now the time has come to introduce our man of the hour, CA Riddhesh Pankhania sir. I'm honored to have received responsibility to introduce today's guest of honor, who will guide us to the CA students about how to face CA examination, how to prepare for the examination, the do's and don'ts. He will also try to sort out the queries which have been asked to submit while filing the webinar Google form link. Actually, about me and him, we have met only once at the branch orientation program in the last year, and only in the one meeting, his impression has long lasted with me. And when we asked about the faculty to take about the how to face CA examination, many elected members gave your name, sir. So we are honored to have you on this webinar. Sir is an elected Central Regional Council member. Apart from being a chartered accountant, he is a lawyer and a postgraduate in commerce, as well as he has passed DISA, FAFD, and NEET examination.
He's the founder of Mado Group, which specializes in conducting and organizing seminars, conferences, and cultural events in a unique way. He's a professional coach and mentor to many students, entrepreneurs, as well as professionals, helping them in public speaking presentation skill. He's also a professional anchor and choreographer. If you go through his Instagram profile, you will get to know that he has more than 10,000 followers, as well as more than 25,000 connections on LinkedIn. His vast knowledge and expertise to students in this field will surely help and boost the confidence among CA students. And without taking much time up, sirs, I will hand over the session to you. Thank you. Thank you so much, sir. Am I audible? Yes, yes. Thank you so much, sir. सबसे पहले respected Pinky ma'am, and thank you so much, Pinky ma'am, for this amazing guidance. I think what I'm going to be covering in an hour, you gave the exact gist summary, and I think that was a perfect start, Pinky Kedia ma'am. Thank you so much for being there and gracing the occasion. Thank you so much. I think before we actually start, we cannot start without thanking the entire Kolhapur branch, Satara branch, Sangli, Ichilkaranji, and the Dhule branch. Thank you so much for organizing and this great support to this webinar. And specifically at this hour, thinking for students that this is something the need of the hour. So thank you so much, all the 5 branches, all the committee members, and the most important, all the Vikasa students, because we can totally understand me and Pinky Area ma'am as well at WRC organizing seminar, webinar of students, the much support that we need from Vikasa students. And thank you so much, all the Vikasa committee students as well for all the branches. Thank you so much, everyone. I can see Pravina ma'am, I can see Ruchikesh Bhau as well, and all the others. So before actually taking off, to very quickly, everyone, all the students who are here, a lot of quick things. Thank you so much for joining in. Can you quickly type in, and every student is going to type and be ready to make sure your fastest finger. Can you all hear me? Are you all excited for this 1 hour session? You're going to write yes or no in the chat box. Can I have yes or no in the chat box? Quick, quick, quick. I should be able to see a lot of yes, hopefully, and not no only. Great, great, great. Thank you so much. So let us understand how many of you are inter students and final. If you are in inter, you'll write I. If you're in final, you'll write F. Quick, let's see how many of them are inter I and F. Let me see. Do I get more I's or do I get more F's? Kya baat hai? I think there are a lot of inter students. Great, great, great. I, and few F's. And I think after every 3 I can get 1 F. That is a lot of inter students and final. The last question before we actually move ahead. Depending on, okay, stop typing, everyone. Great. The next type is you going to be, if you are having current May exams or November exams. For May, you will write M. For November, you will write N. Don't write 23 or anything. Let me see whether you have May or November. M, N. Oh, that's exactly a mix. There are few students from May and there are few students from November 23. Lovely, lovely, lovely. Great, great, great. Thank you so much. I think I've got the exact thing what I've got to be doing. What we're going to be doing is, while we talk about specified things of what all is needed, depending on whether you are in May exams or in November exams, very specifically. And I'm also going to be covering all your questions that you've already sent in the Google form that you had sent. Anytime you have a question, what you could do is you can type in. If that question is relevant to what we are talking, I'll take it right then and there. Or else definitely we'll take in the end. But please note down your questions, or you can send in the chat box or in the question box, wherever you feel you can send it, right? Thank you so much. I'll quickly share my screen. Just give me 1 second. Okay. Okay. I think you all can see the screen.
How to face CA exams? Let's unlock very quick strategies and burst a lot of myths. Why myths? Because as we're in the world where everybody can share their opinions, and we have, as exactly what Pinky ma'am said, the first thing, if you've got exams very recently, if you got me, and if it's still on your mobile, I'm sorry to say there is something that you need to recheck, right? नवंबर वाले बच्चे अभी थोड़े महीने, एक दो महीने फिर भी अपना मोबाइल थोड़ा चला रहे, absolutely no problem. But students who are having May exams, you just don't need it. Why? Very specifically, बात करते हैं कि आपको actually, do you actually need, you know, do you need to go through the exams or go through possibly your mobile? Students who are having exams in this May, why would you need a mobile? Tell me, why would you need a mobile? Institute, it is not going to have. Okay, sure. What I'm going to be doing is we'll keep it in Hindi English mix ताकि अगर any time आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है, आप मुझे तुरंत पूछने वाले हैं, right? Absolutely. So, आपको mobile, why would you need it if you have a May exams? Let's understand one thing. Institute अभी इस महीने में ऐसा कोई चीज नहीं आने वाली कि जो typically आप कहो कि नहीं भाई, this is going to be also there in May exam. The portion that is set for your May exam is done. Once again, there is nothing going to be something of most important which is going to be come across. We're giving a professional exam. Let's understand everything that we study is going to be important. It is not that this particular thing is important and this is not. Of course, you can have an ABC analysis, right? But ऐसा नहीं होने वाला है कि कि last महीने में ये चीजें हमको important notes मिलने वाला है. So my request has rightly started up by ma'am as well. Please do not spend a lot of time on your mobile. Sometimes in case if you want to have your mobile, you can always take up your relevant breaks. But most important, when you're studying with your books, make sure you are keeping your mobile away in a drawer. आपने एक दो घंटे का पढ़ाई कर लिया है, फिर आप ब्रेक ले रहे हो 5-10 मिनट का, वहां जाकर के if you press your mobile, you take your mobile, look at your some chats, it's absolutely all right. That is one of the most important thing that is needed, right? The next slide, you become what you believe. Let's start everything. As rightly said, I think you also said, you look at our thoughts, right? How much do we match? Ma'am said that, typically, let's put it down ke samne CA rakh ke rakho. Why? Because as you are going to see this, right, you get attracted. Now, most important is, are you going to aim for 40 marks because 40 is the bare minimum passing of a subject? Or you are going to aim for 50 marks because you believe, आप बिलीव करते हो कि 50 मार्क ओवरऑल पासिंग है तो आपको 50 रखना हुआ है. लेट अस अंडरस्टैंड, आपका एम जितना ज्यादा होगा उतना बेटर होगा और उस हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे, राइट? दैट इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी ऑफ utmost importance. व्हाई? बिकॉज व्हेन यू एम हियर, जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो जाकर के इफ नॉट यहाँ थोड़ा यहाँ पे पहुंचेंगे तो भी हम पास हो जाएंगे. दैट इज समथिंग वेरी 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 मच नीडेड, राइट? आर यू विथ मी? यस. अगर आपको समझ में आ रही है, हम काफी बार व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू कीप ऑन टॉकिंग ऑल्सो. अगर आपको ये बात समझ में आ रही है, यू आर क्विकली गोइंग टू राइट yes in the chat box. Yes in the chat box. Are you with me? Are you with me? Yes in the chat box or no in the chat box? Let me see whether do I get a yes or no. Great. So the foremost thing, please let us understand, हम कोई कॉलेज या स्कूल के एग्जाम्स नहीं दे रहे, राइट? What is important? We are not giving a college or school exam. We are giving a professional exam depending on whether you're inter or final student. Correct? Important is to start believing from your, can you do it? Does not matter. आपको 10th में 60 आया था, 12th में 70 आया था या 10th-12th में 90 आया था, just does not matter. What matters is अब ये last 1 month, ये last 4 months में depending on when your exams are, आप कितने शिद्दत से, कितने डेडिकेशन से, कितनी डिसिप्लिन से पढ़ाई कर सकते हो मन लगा के. एंड दैट इज द ओनली थिंग व्हिच is important. चलो, I'm going to quickly ask you a question. Can you make 6-pack abs? A lot of boys must be going to gym, right? कुछ लड़के जिम जाते रहेंगे. Can you make 6-pack abs in next 10 days? आप 10 days 24 घंटा जिम में जाके बैठने के लिए रेडी हो. Can you make 6-pack abs in 10 days? Yes or no in the chat box. Answer.
Yes or no? Is there anybody who says कि सर 10 दिन 24 घंटा जिम में बैठ जाएंगे तो बन जाएगा? Is there somebody saying yes? No, right? Absolutely not. Not correct. When can you make? If you can go for 4 months, 6 months regularly for 1-2 hours, right? With a discipline, you can definitely make six-pack abs. What does it say? You need to have that disciplined approach. आपको discipline लानी पड़ेगी. Same goes here as well. In this last 1 month before the exam, what is needed is you need to follow a routine. मतलब the very first routine आपको जो follow करना चाहिए वो कौन सा है? Please avoid sleeping between 2 to 5. That is afternoon जब आपका पेपर है. Please avoid eating food between 2 to 5. उसके पहले खा लो. Right? Eat at 1 o'clock. Eat at 12:30. No problem. Don't sit and eat between 2 to 5. Your 2 to 5, get your brain so activated, get your hands so activated between 2 to 5, because एक महीने में जब आप पेपर लिख रहे हो, your hand should be used to during that point in time. That is something which is of utmost important. The mind channelizes and the mind gets used to जो हम कर रहे हैं. What do we call? We call it 21-day rule, right? 21-day rule क्या बोलता है कि 21 दिन आप लगातार जो चीज कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली बाद में सेट हो जाती है. इट्स लाइक अगर आप 21 days अलार्म से उठ रहे हो बाय कीपिंग एन अलार्म ऑफ 6 o'clock in the morning, 22nd डे पे नींद ऑटोमेटिकली खुल जाएगी. राइट? करेक्ट है? अपन ऑटोमेटिकली उठिया 22वें दिवशी. करेक्ट? एंड दैट इज व्हाट इट शोज. We get used to a particular pattern of studying. And that is why one of the most important thing is, what strategy do I follow? Correct? Hai? What strategy do I follow is, a lot of people, we always say, and it's always nice as well, कि let's study in the morning, right? But what is important is, are you comfortable doing that? अगर आप बोलते हो कि सर मुझसे वो मॉर्निंग उठ के नहीं हो रहा है, it's absolutely not a problem, provided your night study or your type, way of study gives you results. वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, दे आर्ग्यू नहीं, हमको ऐसा जम रहा है लेकिन उससे रिजल्ट नहीं आ रहा. इफ समथिंग ऑफ योर स्टाइल इज नॉट फेचिंग यू रिजल्ट, आपको क्या करना पड़ेगा? उस पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा. एंड दैट इज समथिंग विच इज ऑफ utmost importance. You need to understand what is suiting you. A lot of times what happens is, we do not know what is suiting us. So then what do you have to do? You keep on trying different things and see what is suiting you. Just because मैंने आपके कुछ कहा कि आपको ये करना है, you don't follow that blanket rule. आपको check करना पड़ेगा, is that suiting you or not? And by this time, if you have an exam in the month of May, you should know what is suiting you, because आप उस हिसाब से पढ़ रहे हो. Tell me, a lot of you, everybody's passed 10th standard and 12th standard? Yes, right? Of course, but naturally, तभी तो अभी पहुंचे यहाँ पे, right? The whole important idea is that I'm trying to say is, हम स्कूल में थे, we learned from A for apple is from where their education started, right? A for apple से we started our education to what? We could remember things. We could remember things. Meaning, if you have to study this, अगर हम पेपर घुमा के ये देख रहे हैं कि मुझे याद रह रहा है कि नहीं, एक पेज पढ़ लिया आपने, एक पेज पूरा पढ़ लिया, फिर आप जैसे ही पेज आगे बढ़ जाते हो आप सोचते हो, अरे यार पहले का याद है क्या नहीं. Do not doubt this. Never doubt your mind. Why? Because what is important is you will remember things. Don't worry. Why? Because your brain is used to studying, remembering things, and then accordingly put it out in different manner. In currently the case, हमें exam में लिख के बताना है. So our brains are used to doing that particular thing. Remember that particular thing, and that is of utmost importance, right? Time for something new. Let's look at what is this new thing that we are going to talk about. The foremost thing is the attitude and positivity that we talk about, right? Now, what is important in the next 1 month for your examination? You need to have the correct attitude. Meaning, a lot of times, आपको लगेगा, अरे यार, मेरे फ्रेंड्स का ज्यादा पढ़ के हो गया है, उसका रिविजन ज्यादा हो गया है, मेरा कम हुआ है. It's absolutely all right. Please understand, do you have a control on it? Do you have control on it? The best that you can do, जो आप कर सकते हो, क्या आप कर रहे हो, क्या आपका बेस्ट आप दे रहे हो.
अगर आप बहुत टाइम पास कर रहे हो मीनिंग आप अपना बेस्ट नहीं दे रहे, राइट? अगर आप इसकी चिंता करने वाले हो कि कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, बट वो आपके हाथ में नहीं है. What is important to understand is what is in your hand. What is in your hand is, I will tell you. All of us have got 24 hours, correct? है? All of you have got 24 hours. Now, for the next 1 month, if you've got exams in the month of May, correct है? And आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, 6 घंटे की पढ़ाई, 6 घंटे की आप sleep, you're going for a sleep for 6 to 7 hours. So 24 minus 7 is how much? 17, correct है? आपको normal, your everyday routine course would take to 3 to 4 hours. तो let's say 4 घंटा. 17 minus 4 कितना होता है? 13, 14, 15, 16, 17, 13 hours. For the remaining 13 hours, what else will you do if you have exams? The only thing जो आप कर सकते हो for अगले 13 hours is your study. तो ऐसा नहीं है कि भाई हमको 12 घंटा पढ़ना है, 9 घंटा पढ़ना है, 13 घंटा पढ़ना है. आपको फुल डे, अगर अभी आपकी एग्जाम है तो पढ़ाई करनी है, बिकॉज आपका कर्म वो है. करंटली व्हाट इज योर कर्मा टू डू? टू स्टडी. जब काम करना रहेगा तभी हमारा कर्म रहेगा टू डू पढ़ाई, करेक्ट? दैट इज समथिंग विच इज ऑफ utmost importance to understand that what am I supposed to do now. As ma'am also rightly said, if you think, maybe half an hour of walk, half an hour of watching television, half an hour of gymming, or half an hour of playing cricket, TT, anything, अगर आपको फ्रेशनेस देता है, राइट, आपको रिफ्रेश करता है, देन इट इज एब्सोल्युटली ऑल राइट टू डू दैट. कि भाई आधा घंटे में मैं फ्रेश हो रहा हूँ, इट्स एब्सोल्युटली डू दैट, जिससे एक और बार आपको एक रिफ्रेश फीलिंग आती है, यू गेट टू योर कोर्स स्टडीज. दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी ऑफ utmost importance. Now, let's move to the next slide. After attitude and positivity, tell me one thing. If every day there is a lot of motivation on your WhatsApp, correct? वो सुबह सुबह गुड मॉर्निंग मैसेजेस आ जाते हैं, मोटिवेशनल मैसेज आते हैं, बट अगर देर इज जस्ट मोटिवेशनल मैसेज एंड देर इज नो एक्शन, विल इट वर्क? अगर सिर्फ मोटिवेशन मैसेज है बट उसके बाद एक्शन कुछ नहीं है, विल इट वर्क? yes or no? Can I have the yes or no in the chat box? Y or L? If there is just motivation and there is no action towards it, will it work? आप खुद को बोलोगे मैं कल से पढ़ाई करूंगा, लेकिन बुक नहीं उठा रहे हो, तो कुछ फायदा होने वाला है? Definitely no, right? It just does not work. So that is what we get to. After positivity, attitude, what is going to be most important is strategy creation. Now, the whole strategy is based on planning. A lot of times, आपने अगर पिछले 2-3 महीने में बहुत बार प्लान बनाए रहेंगे और प्लान्स हैव ऑलवेज फेल्ड. क्यों? क्योंकि हम प्लान करते हैं मुझे 5 दिन में पढ़ाई करना है, लेकिन वो पोर्शन 5 का 7 दिन लग जाते हैं, 6 दिन लग जाते हैं, कभी कभार 8 दिन लग जाता है. सो व्हाट हैपेंस इज, नेक्स्ट टाइम यू जस्ट स्टॉप प्लानिंग. काइंडली डू नॉट डू सच अ मिस्टेक. यू कैन नॉट स्टॉप प्लानिंग. आपको प्लानिंग हमेशा करनी पड़ेगी. यू विल ऑलवेज हैव टू मेक strategies. Why? Because without strategy, it just does not work. That is something which is of utmost importance. Now, how do you start your strategy? Revision strategy. I personally feel if you study for 365 days before the exam, meaning अगर आपका एग्जाम 1 मई या 1 नवंबर है, तो उसके पहले के 1 साल से पूरा अगर पढ़ाई कर रहे हैं कंटिन्यूसली, नॉट okay. Others kindly keep muted. Keep your audios on mute, guys. Thank you so much. So, if you study for 1 full year, when I use the word 1 full year, पढ़ाई मतलब does not mean आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, correct है? Depending on how much time you are, studying, 3 hours, 4 hours, along with your office in the start, it's absolutely fine. As you go further nearer to your exam, आपके number of hours बढ़ते जाते हैं, correct है? So that is something which is needed. So if you start for 365 days, I think that's the best thing that you could do, and your studies get started. Now, what is very important is, tell me, when we were in 10th standard, 12th standard, typically, right? What we did was, all of us, our brains have become this much only. हमने पढ़ाई जितनी करी, करेक्ट है? अब क्या हो रहा है सीए में कि टाइम इतना ही है, लेकिन पढ़ाई इतनी सारी हो गई. पॉसिबली इन कॉलेज हमारा एक बुक इतना होता है, तो 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक, 5 बुक, 6 बुक, 6 सब्जेक्ट है, तो मिला के इतना पढ़ना है एक साथ, करेक्ट है? ओवर दैट 6, 7, 8 days ऑफ एग्जामिनेशन. व्हाट इज हैपनिंग हियर इन सीए एग्जाम? आपकी एक बुक इतनी है. सो देन इफ यू हैव टू स्टडी 8 सब्जेक्ट्स, इट बिकम्स सो मच.
right? So the moment there is a lot of things to study, what do we do? Correct? The moment there is a lot of things to study is we keep revising. We do multiple revision. Now, what is the benefit of revision is? Tell me, मैं आपको पूछता हूँ and anybody can answer. आपके साथ 4-5 साल पहले लेट्स से कोई एक when you're walking on the road or somewhere कुछ इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, पर्टिकुलरली, एंड उसके बाद आप उस रास्ते से गए नहीं कभी, 4 साल बाद आप वापस उस रास्ते से जाते हो, करेक्ट है कि आपको सडनली याद आ जाता है, आपको आप भूल गए थे उस चीज को, बट द मोमेंट यू पास थ्रू दैट रोड और दैट प्लेस, कि आपको सडनली याद आ जाता है कि अरे यार यहाँ पे ऐसा हुआ था. डू यू रिमेंबर? येस और नो. राइट डाउन वाई और एन, येस और नो इन द चैट बॉक्स. डू यू रिमेंबर? आप कहीं से जा रहे हो, करेक्ट है. डू यू रिमेंबर अदर्स? यस. व्हाट हैपेंस विद दैट? क्यों याद आता है? और बाद में 4 साल में आपने कभी याद भी नहीं किया. क्यों? That is the beauty of the brain. What happens is our mind is like absorber. A lot of things that we keep studying, that we keep doing, that things happen, it there in our mind. As the moment we revise, it comes back. Correct? This is the power of revision, which a lot of students miss. A lot of people say, "अरे यार, क्या फर्क पड़ता है? मैं तो." Let us understand, please. Right? क्या होता है? Lot of students पहली बार पढ़ाई कर लेते and exam test दे देते, because there is a big hue and cry of tests. And what happens is they do not get good marks in test and then motivation falls down कि अरे यार मैंने पूरा पढ़ाई की and test में marks नहीं मिले. Does this happen to you? कि अरे यार पूरा पढ़ाई किया and test में marks नहीं मिले. Does this happen to you? Yes, yes. Correct है कि पढ़ाई कर लिया और फिर भी टेस्ट मॉक टेस्ट दिया और मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं मिला. करेक्ट है. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाई डज दैट हैपन. बिकॉज द पोर्शन इज ह्यूमंगस एंड हमको बार बार हमने नहीं पढ़ा है. एक बार पढ़ के सबको याद नहीं रह सकता ना. ये बहुत कम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विल रिमेंबर. सो व्हाट डू यू नीड इज मल्टीपल नंबर ऑफ रिविजन्स. नाउ हाउ डू यू डू? नाउ डिपेंडिंग ऑन द स्टाइल दैट यू आर यूज्ड टू. करेक्ट है. वेदर आप एक ही सब्जेक्ट फुल टाइम उठा रहे हो, मतलब 3 दिन के लिए एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, या तो आप दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम. करेक्ट है. डिपेंडिंग, आप पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते अगर बोर नहीं होते हो तो आप 2-2 सब्जेक्ट पढ़िए. सुबह फर्स्ट हाफ में 1 सब्जेक्ट एंड सेकंड हाफ में अदर सब्जेक्ट. यू आर स्टडिंग, एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम. दैट इज व्हाट विल यू प्लान डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू गेट यूज्ड टू. करेक्ट है. You need to do revision multiple times, and that is why we say if you have studied and revised 3 to 4 times, right? For people who have got exams in November, make sure you plan your revision in such a manner कि multiple times अगर आप पढ़ रहे हो तो it helps. Typically for students who've got exams in November, अगर आपने एक बार पढ़ लिया, the last 3 months is your core revision time. Last 3 months मतलब approximately 90 days. बराबर है. 90 डेज है अगर, तो क्या होने वाला है? 10 दिन में ऐसे ही निकाल देता हूँ तो 80 डेज. 8 सब्जेक्ट है हमारे पास, डिपेंडिंग ऑन योर इंटर और फाइनल. 8 सब्जेक्ट, राइट? 10 डेज ईच सब्जेक्ट. इन 10 डेज में एवरी सब्जेक्ट कैन बी रिवाइज थ्राइस. 5 days फर्स्ट रिविजन, 3 days सेकेंड रिविजन, 2 days थर्ड रिविजन. मतलब पेपर 1 5 दिन, पेपर 2 5 दिन, पेपर 3 5 दिन, ऐसे करके 40 डेज हो जाएंगे. 5 8 40. उसके बाद 3 दिन में मैं पेपर 1, फिर पेपर 2, फिर पेपर 3, एंड एंड में 2 डेज में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3. व्हेन यू डू दिस, a lot of people complain कि सर 1.5 days में पढ़ाई फुल पेपर कैसे रिवाइज होएगा? We have 1.5 days का leave, right, during exams. A lot of students are unable to complete the entire revision in 1.5 days. Now आप 1.5 दिन में कैसे पढ़ सकते हो? Provided पहले हमने सही तरीके से पढ़ा है. What is revision? Can somebody tell me what is revision? You can unmute yourself and answer. Can you tell me what is revision? I am going to ask you a question. What is revision? To everyone. Anybody can answer. What is revision? Feel free to unmute and answer. Come on, come on, come on. We're going to keep it as interactive as possible. What do you think? What is revision? Anyone from the audience? Come on, come on. You'll have to answer. What is revision? Revision का meaning क्या होता है? What is revision? Anyone? Come on. No one. I thought, come on. Anyone will have to answer. You will have to answer the question. हम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक. Come on. Who's going to answer? Who's the smartest lot here? What is revision? Anyone? Come on.
Who's going to answer? You can answer in the chat box also, or you can unmute and answer as well. What is revision? Who's going to answer? Let's see who answers the first. I will wait for your answer. What is revision? Let me know. Recall anything which we have to read. Remind करना. Very good. बहुत बढ़िया. Now, आपको recall कब होगा? Can you tell me? Revisualizing the entire goals again. Very good, Shubh. How can you remember things or how will you recall things? अगर मल्टीपल बार चीजें करी हुई है तो रिकॉल फास्टर होगा. डू यू बिलीव? करेक्ट है. मल्टीपल बार चीजें करी है या तो जस्ट थोड़े दिन पहले उसको हमने देखा रहेगा या पढ़ा रहेगा तो रिकॉल फास्टर हो जाएगा. एब्सोल्युटली, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज. नाउ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू, एंड प्लीज पीपल हु गॉट स्पेसिफिकली एग्जाम्स इन मे, आज 29 मार्च है, अगर 1 मई से आपकी एग्जाम शुरू हो रहा है, टिपिकली बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैं पेपर 1 to 8 बोलूंगा बिकॉज इंटर फाइनल डिपेंडिंग ऑन व्हाट सब्जेक्ट यू हैव. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू 28, 29, 30 को पेपर 1 कर रहे पढ़ रहे, फिर उसके पहले 27, 26 को पेपर 2 पढ़ रहे, फिर 25 एंड 24 अप्रैल को पेपर 3 पढ़ रहे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ऐसा पीछे अगर शेड्यूलिंग करा हुआ है तो पेपर 8 उन्होंने कभी पढ़ा हुआ है? अराउंड 10th और 11th अप्रैल. समझ में आई बात? Yes or no in the chat box. Did you understand what I say? Did you understand what I say? Yes, correct है. But इसके वजह से क्या हो गया? This is an entirely wrong planning system. आपने 10 अप्रैल को पेपर 8 पढ़ा था, लेकिन आपका पेपर 8 कभी है? अराउंड 14, 15, 16th of May. करेक्ट है? Yes. So what has happened? There is 1 month gap जब से आपने रिवाइज ही नहीं किया उस पेपर 8 या पेपर 7 को, जिससे क्या हो जाता है, जब वो तभी रिकॉल करने जाओ तो याद नहीं रह पाता. सो माई thorough, totally submission to all of you is make your revision otherwise. 11, 12 को पेपर 1, 12, 13, whatever it is. 14, 15 is paper 2, 16, 17 paper 3, and paper 4, 5, 6, 7, 8. So the last paper 8 अगर आपने around 26, 27 अप्रैल को, 25, 26 अप्रैल को अगर रिवाइज किया हुआ है, so the number of days instead of 30 जब भी पहले पढ़ा था becomes 15. So recalling, memory becomes better. Have you understood what I have said? Have you understood what I have said? Yes, no in the chat box. Yes, no in the chat box. Have you understood what I have said? Can I have a yes or no? Yes. Thank you so much. Thank you so much. This is the very big mistake which a lot of students do. कि वो पेपर 7, 8, 6 बहुत पहले रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्टिंग के पेपर्स का ही ध्यान देते, थिंकिंग कि अरे यार पेपर स्टार्टिंग का अच्छा जाएगा तो मुझे मोटिवेशन आ जाएगा. प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर गिविंग सीए एग्जाम्स. इतना दिमाग में सोच के रखो कि 1 या 2 पेपर तो कुछ अलग आएगा, बट प्लीज अंडरस्टैंड, अगर पेपर आपका डिफिकल्ट जा रहा है और पेपर ही डिफिकल्ट था तो पूरे जनता का भी पेपर डिफिकल्ट गया हुआ आहे. सगळ्यांचाच पेपर डिफिकल्ट गेलाय तर काय होणार आहे? सगळ्यांना कमी मार्क्स मिळणार आहेत. अँड इफ यू गेट 40 in one paper, if you get 40 in one paper, इंस्टीट्यूट टेल्स कि दूसरे वाले में 60 आ जाएगा तो भी पास हो जाएगा, तो टेंशन नहीं है. तो काफी बच्चे बोलेंगे अरे सर 40 आना भी डिफिकल्ट है. क्यों? लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई वुड, अगर आप पिछले 7-6 मंथ से पढ़ाई कर रहे हो, देयर वोंट बी एनी पेपर जो 100 to 100 मार्क्स का डिफिकल्ट होगा. बराबर है? 100 में से 50 मार्क के क्वेश्चंस तो इजी आते ही है. व्हेन आई यूज द वर्ड इजी, मतलब हमने जो पढ़ा हुआ है वो सब चीजें आनी अच्छे से. तो उस 50 मार्क को बहुत अच्छे से लिखा, 50 मार्क के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से लिखा, तो व्हाट इज द मिनिमम मार्क्स दैट यू कैन स्कोर? राइट इन द चैट बॉक्स. 50 मार्क को बहुत अच्छे से लिखा, मतलब जो आता है उसको प्रेजेंटेशन वगैरह से अच्छे से लिखा, तो व्हाट इज द मिनिमम मार्क्स दैट यू कैन स्कोर? कम ऑन. 40, वेरी गुड. 40, 45, वेरी नाइस. सो मिनिमम 40 दैट यू कैन स्कोर. चलो मैं तो 35 बोलता हूँ, मैं तो 35 बोल रहा हूँ. तो 35 हुए तो भी अभी तो पास होना है, तो रिमेनिंग 50 है ना. कैन यू गेट रिमेनिंग 50 में से 5, 10, 15 मार्क्स? करेक्ट है. तो इफ यू गॉट 5 मार्क्स, इट इज 40, 10, 45 and 15, it becomes 50. Meaning to get 45, 50 overall out of 100 is definitely not impossible, provided you plan and study. That is something which is going to be of utmost important. Are you with me? Yes? Right?
So that's called your 365, 180, 90, 60 and 30 day strategy. Let's move to the important strategies 30 days के बाद 1.5 days of every paper में क्या करने का. What to do in 1.5 days of every paper. Now, one of the very important thing to study in 1.5 days of paper is पेपर 1 खत्म हो गया, पेपर 1 2 से 5 होता है, घर पे आ गए नाश्ता वास्ता करके. नाउ डिपेंडिंग ऑन योर स्टाइल ऑफ स्टडिंग, आप रात को सोते हो, रात को पढ़ाई करते हो, पहले सो जाने का है टिपिकली, राइट? Start with the difficult things. A lot of people do is what? A lot of students start with easier things. लेकिन क्या हो जाता है, काफी बार अगर इजी चीजों से पढ़ना शुरू कर देते हो, बट एग्जाम का प्रेशर इतना होता है तो इजी भी काफी बार डिफिकल्ट लगने लग जाता है. करेक्ट है? तो स्टार्ट विथ योर एबीसी मार्किंग, एबीसी एनालिसिस करने के बाद स्टार्ट विथ योर डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज यू आर स्टिल फ्रेश एट दैट पॉइंट टाइम, बिकॉज वो नया सब्जेक्ट उठा रहे हो. पेपर 1 का भार खत्म हुआ तो पेपर 2 स्टार्टिंग में मजा आ रहा है पढ़ने में. करेक्ट है? एट दैट पॉइंट इन टाइम. तो यू स्टार्ट विथ डिफिकल्ट थिंग, फिनिश ऑन दैट पेपर 1 का डे, और फिर नेक्स्ट दिन पूरा दिन है, सुबह से अगर शुरू कर रहे हो तो शाम तक फिनिश कर लो ऑल द डिफिकल्ट थिंग्स दैट यू हैव बीन डूइंग. और अगर और लेट हो रहा है तो नाउ पिक अप दोस इजी चैप्टर्स व्हिच यू कैन क्विकली बैंग ऑन. डोंट कीप इट फॉर थर्ड डे. वो सेकेंड डे पर ही आफ्टरनून के बाद चाय पीने के बाद यू स्टार्ट दैट, एंड फिर उसके बाद भी अगर समय, गो बैक टू द रिमेनिंग रिविजन ऑफ दैट डिफिकल्ट थिंग. और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग भी तो है, पेपर 3 के दिन एग्जाम 2 बजे होती है, तो सुबह का पूरा टाइम भी तो आपके पास है, राइट? दैट इज समथिंग विच इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू इज, वो इजी वाली चीजें उठा लेते हैं और वही पढ़ते रहते हैं, फिर वो डिफिकल्ट वाली चीजें वो रह ही जाती है, राइट? एंड अगर उसमें से ही चीजें आ जाती है तो सो प्लीज अंडरस्टैंड that is going to be of utmost important planning of your 1.5 day during the exam. अपने इसमें एबीसी एनालिसिस कर लो. अगर नहीं करा हुआ है, प्लीज उस 1.5 दिन में 1.5 days में आपको एबीसी एनालिसिस नहीं करना है. When will you do ABC analysis? You will have to do ABC analysis today. You will have to do ABC analysis today itself. Meaning, आज जब आप रिविजन कर रहे हो, when you are doing revision right away in this 30 days, आपको प्लान करके रखना है कि मेरे को 1.5 days में पढ़ाई कैसे करनी है. नहीं तो क्या हो जाएगा, उस 1.5 days में आपका प्लानिंग विल टेक हाफ एन आवर, एंड एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट. मैं आपको नहीं बता सकता कि ये चैप्टर्स यही ऑर्डर में आपको पढ़ना है, करेक्ट है? इसलिए मैं सब्जेक्ट वाइज नहीं जा रहा हूँ. अगर कोई बता रहा है, क्यों, हर बच्चा अलग है. इफ आई एम गोइंग टू टेल यू कि नहीं इसी ऑर्डर में करना है, प्लीज अंडरस्टैंड, आपके लिए इजी है तो किसी और बच्चे के लिए कुछ डिफिकल्ट हो जाएगा. इसके लिए जो इजी आपके लिए शायद डिफिकल्ट होगा. यू विल हैव टू मेक योर ओन प्लानर इन दीस 30 days ड्यूरिंग योर रिविजन इटसेल्फ, राइट? एंड किधर क्या पढ़ना है, आई होप यू हैव मार्क्ड एंड चेक. मीनिंग, अगर कोई चैप्टर में, लेट्स से पर्टिकुलर चैप्टर in a subject, there are 10 chapters. In a particular chapter there are 20 sums. Will you go through full 20 sums? 110% no. आपने वो मार्क किया होना चाहिए out of those 5 adjustments, which are those 2 adjustments which are different in this sum. Correct है? You should have marked and kept. You have to only see those 2 adjustments. Very simple. बाकी का 3 सेम है भाई, तो हर सम में थोड़ी देखने की जरूरत है. करेक्ट है? एंड one question you can fully solve for the pattern कि एनपीओ का आंसर क्वेश्चन है तो कैसे कर रहे हैं भाई, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज हाउ आर वी डूइंग. एमआई बैंकिंग का क्वेश्चन है तो कैसे कर रहा है, उसका पैटर्न वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व एंड कीप. दैट इज समथिंग व्हिच इज ऑफ utmost important. Are you with me? Are you with me के ऊपर से जा रहा है? Are you with me? Write down yes or no के ऊपर से जा रहा है सब कुछ. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Yes, yes, yes. Lovely. 3-4 लोग ही yes लिख रहे हैं, बाकी कहाँ गए सारे? Are you with me? Very good. थोड़ा ऐसा एक्टिव रहो. Right? Thank you so much. So that is something you are going to do in that 1.5 day of revision time. And trust me, मैं तो 2 बार रिवाइज करता हूँ. 1.5 दिन में भी मैं 2 बार रिविजन का यूज टू. मैं डे 1 का एग्जामिनेशन हो गया, उसके बाद से शुरू करता हूँ, डे 2 पे पूरा एंड तक खत्म करता हूँ, और फिर डे 3 सुबह ये सब कुछ वापस रिवाइज करता हूँ. Because that is how I am used to. But that may not be needed by you. If somebody is like that, go ahead, no problem. But if you're not at all an issue, right? That is what you're going to do in 1.5 day. मार्क करके अभी से रखो, या तो आपने एक अलग एडजस्टमेंट रिलेटेड का बुक बनाए कि इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो है वो उसको अलग बुक में लिखे, वी कॉल इट समरी बुक. A lot of people say कि भाई थियोरी का समरी बुक बनाएंगे, कैन यू मेक प्रैक्टिकल का समरी बुक? यस, बट इट शुड बी मेड बाय योरसेल्फ, बिकॉज आपको ये जो डिफिकल्ट है वो शायद दूसरे फ्रेंड के लिए नहीं है, राइट? सो ड्यूरिंग, अभी जब 30 days में रिविजन कर रहे हो, दैट इज व्हेन यू हैव टू
do it up, of utmost importance. Are you with me? Yes. Now, moving to the next, 1.5 days of every paper तो हो गया. सबसे important चीज पे आते हैं 3.25 घंटे की एग्जाम. Yes, you heard me correct. 3 hours and 15 minutes of examination is where the entire thing is going to be. Correct है? What happens in 3 hours and 15 minutes? Can somebody tell me जो 15 मिनट है पहले तो नहीं होते थे, around 17-18 से I think institute started giving that 15 minutes. Why is this 15 minutes given? ये 15 मिनट हमको क्यों दिया हुआ है इंस्टीट्यूट ने? क्या कोई बता सकता है ये 15 मिनट क्यों दिया हुआ है? Anybody, anyone? You can either unmute and answer, or you can write in the chat box anything. Why is this reading time? Correct है? Reading time के अलावा थोड़ा more to analyze the question paper. Very good. 1+6 question attempting sequence. Very good, Narendra. QP analysis to stabilize the panic attack we get. Shubh, excellent answer. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Any more answers by anyone? Why is this 15 minutes given? Reading questions. Very good to decide which questions we skip. To prioritize the questions, to clear our mind. Very good. सबसे पहली बात and सबसे foremost important observation. Very good, very good. Super. I'm loving the enthusiasm of all the students. सबसे important चीज 15 मिनट में डिसाइड कर लेता है आपका नेक्स्ट 3 घंटे कैसे होने वाला है, राइट? As somebody wrote very clearly, to clear our mind, to have that panic attack. 15 मिनट में अगर आप क्वेश्चन देख लेते हो और बोलते हो अरे यार ये नहीं आता है, मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता है, नो प्रॉब्लम. प्लीज अंडरस्टैंड, अपने को 100 में से 100 नहीं लाना है. डू यू हैव टू गेट 100 out of 100? नो. प्लीज अंडरस्टैंड. So there will be 2, 3, 4 questions which will give you like कौन सा पेपर है भाई ये? वो क्वेश्चंस को देख के अगर डर गए तो भाई कुछ तूफानी जीवन में कैसे करेंगे? सीए कर रहे हैं ना, तूफानी तो करना पड़ेगा. What I'm trying to say is, institute will always give some questions which will be very different, which you may not have even read, and you'll be like, this is Greek and Latin. ये कहाँ से आ गया? बट उसको देख के अगर आपका मोटिवेशन गिर गया तो नहीं चलेगा. आपको क्या करना है? उन चीजों को इग्नोर करना है. करेक्ट है? एंड दैट इज व्हाट वी से व्हेन वी आर वॉकिंग ऑन द रोड, अ लॉट ऑफ हर्डल्स विल कम, बट उस हर्डल के कारण अगर गिर गए तो हमको उठना है या उनको अवॉइड करते आगे बढ़ना है. मीनिंग then you have to prioritize which questions you want to attempt and in which order. Now, one of the foremost thing, a lot of people say, sir, क्या हमको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी ऑर्डर में अटेम्प्ट करना पड़ेगा? नो. आपको अगर क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करनी है, आप क्वेश्चन 3 से शुरुआत कर सकते हो. 4 से शुरुआत करनी है, क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत कर सकते हो. बट सब क्वेश्चंस ऑफ एवरी क्वेश्चन शुड बी टुगेदर. मतलब क्वेश्चन नंबर 4 अगर शुरू किया और 4 में ए बी सी है तो क्वेश्चन नंबर 4A पूरा खत्म करो, 4B पूरा खत्म करो. 4C अगर आपको नहीं आता है तो 4C लिखो और 1 पेज 2 पेज जो भी जितना बड़ा क्वेश्चन हो छोड़ दो, एंड देन यू मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 whichever it is, राइट? बट सब क्वेश्चन शुड बी, यू कांट बी डू 4A 4B पहले सॉल्व कर लिया और 4C एंड में किया. ऐसा नहीं कर सकते, 4C को मार्क्स नहीं मिलेगा. करेक्ट है? सो मेक श्योर दैट इज देयर. नेक्स्ट थिंग, जो सबसे पहला क्वेश्चन, मुझे बताओ आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 से में से सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करोगे? आइडियली विच क्वेश्चंस विल यू सॉल्व सबसे पहले? कौन सा क्वेश्चन सॉल्व? अच्छा, क्वेश्चन नरेंद्र बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अब्दुल बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6. करेक्ट आंसर ऋषिकेश. सामने होते तो मैं चॉकलेट देता. द वन विच वी आर कॉन्फिडेंट ऑन. पहले से ऐसा सोच के मत जाओ मैं क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करूंगा, 5 से शुरुआत करूंगा, 4 से शुरुआत करूंगा. मैं किससे शुरुआत करूंगा? जो क्वेश्चन मुझे सबसे पहले आता है. और सबसे पहले मुझे बताओ, विल दी एंटायर, मतलब इमेजिन अगर 5-6 क्वेश्चन है और सब में एबीसी है, मतलब यू नो अराउंड 15 to 20 क्वेश्चन है. एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ना जो पूरा अच्छे से आता है. मिनिमम 2 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन होने चाहिए. करेक्ट है? तो सबसे पहले 2 क्वेश्चन जो आप लिखोगे, दे कैन नॉट गो रॉन्ग, एंड आपको फुल आउट ऑफ 100, आई मीन 5 out of 5, 6 out of 6, 8 out of 8, 10 out of 10, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे मार्क्स मिलने चाहिए. यू हैव टू अटेम्प्ट, मतलब एग्जामिनर के ऊपर आपने स्टार्टिंग में इंप्रेशन बताया, यार ये बंदे को तो सब आ रहा है, यार तो सगळंच येतंय.
करेक्ट आहे. तेच खरं आहे आणि तेच इम्पॉर्टंट आहे. व्हॉट इज व्हेरी मच नीडेड इज यू आर गोइंग टू प्रायोरिटाइज एंड सॉल्व दोज क्वेश्चन. सो यू नीड नॉट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6. अगर आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से आता है, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर 4 क्वेश्चन है, जैसे 4-4 मार्क 5-5 मार्क के, और उसमें से 3 अच्छे से आते हैं, नो प्रॉब्लम, गो अहेड डू इट. फोर्थ वाले के लिए जगह छोड़ दो. राइट है? एब्सोल्युटली. बट यू स्टार्ट विद दैट एंड देन यू मूव नेक्स्ट. Please, every question needs to be started on a new place. So do not, start just anywhere. मतलब new question, new page. और मैं कहूंगा सब क्वेश्चन भी, अगर नीचे ज्यादा जगह नहीं हो, 2-4 लाइन लिखी है तो सब क्वेश्चन वहीं शुरू कर दिया, नो प्रॉब्लम. सब क्वेश्चन भी यू कैन स्टार्ट ऑन अ न्यू पेज. राइट? रिमेंबर दैट. वेरी एसेंशियल. Give me 1 second. I'm just going to put down new. Okay. Cancel. Okay. Now, please, when you write down question number 4A लिख रहे हो, question number 4B लिख रहे हो, try writing in the center as well, ताकि वो अच्छे से दिखाई दे. काफी बार बच्चे के कॉर्नर में लिखते हैं और फिर सामने एग्जामिनर को ठीक से नहीं दिखाई देता. आई हैव सीन फाइनल के पेपर्स ऑल्सो कि बच्चे ने 4A के बदले 4B भूल से लिख दिया है एंड देन इज नॉट बीन गिवन मार्क्स. ये सिली मिस्टेक है, बट इट इज अ ग्रेव मिस्टेक डियर, क्योंकि आपने 4B के आंसर पे 4A का लिख दिया हुआ है. ऐसी गलतियां ना करें. तो एंड में देखना जरूर चाहिए. करेक्ट है? दिस समथिंग विच नीडेड. सो स्टार्टिंग के 15 मिनट में हमने प्लान कर लिया पहले कौन से क्वेश्चंस करने. करेक्ट है? नाउ वन ऑफ द वेरी फोरमोस्ट थिंग फॉर एवरीबडी, प्लीज ध्यान में रखिए. सबसे पहले, क्या सब लोग का ध्यान यहाँ पे है? लेट मी नो. इज एवरीबडी कॉन्सेंट्रेटिंग योर? यस और नो इन द चैट बॉक्स. इज एवरीबडी कॉन्सेंट्रेटिंग योर? Let me see. How many of you? I should get everybody say yes. फटाफट फटाफट. Yes भाई, कुछ तो लिखेंगे. फटाफट सब लोग लिखेंगे. सब लोग फटाफट फटाफट फटाफट. Very most important thing. Now, what is one of the foremost important thing in an examination? Let's say 100 मार्क में से, ठीक है, 100 मार्क्स में से 10 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम डिफिकल्ट और हमको नहीं आता. पॉसिबल है? ऑफ कोर्स पॉसिबल है. अभी 90 मार्क्स. करेक्ट है? तो अगर मैं 90 मार्क्स को 3 घंटे में ब्रेक कर दूं, तो टिपिकली 30 मार्क्स का लिखना है. बट फर्स्ट 1 आवर में मैं कौन सी चीजें लिखूंगा जो मुझे ज्यादा सबसे अच्छे से आती है. तो अगर जो मैं चीजें ज्यादा अच्छे से आता ही है, तो उसको कंपैरेटिवली थोड़ा फास्टर भी होता है एज कंपेयर टू बाद में की चीजें. सो अप्रोक्सीमेटली इन माई फर्स्ट 1 आवर, around 35 to 40 marks is what I can write the paper. Yes, the maximum paper that I can write is of 40 marks. Minimum of course 30 marks. Correct है? Now, सबसे फर्स्ट 1 आवर में जो 40 मार्क का पेपर मैंने लिखा, what is the minimum marks that you should score out of 40? Can somebody tell me? Out of 40, how much is the minimum marks that I should score in my first 1 hour itself? First 1 hour में क्या लिखूंगा मैं, जो चीजें अच्छे से आती है? बराबर है? 30. वेरी गुड ऋषिकेश, वेरी गुड. एग्जैक्टली. इन द फर्स्ट 1 आवर अगर आपको 30 मार्क्स मिल चुके हैं, तो नेक्स्ट 1 आवर के 30 में आपको 15 मिल जाते हैं, तो 45 हो गया. और लास्ट 1 आवर के 30 में, बिकॉज वहां पे डिफिकल्ट चीजें अटेम्प्ट करोगे, तो 5 या 10 मिल पाएंगे, तो भी आपको 55-60 आ रहा है. करेक्ट है? दिस इज हाउ यू ब्रेकअप. एंड पार्टली योर आईज हैव टू बी ऑन द वॉच. मेरा एक क्वेश्चन हो गया, फटाफट लिखते जाओ. हर 10-15 मिनट बाद आपका घड़ी पे नजर जाना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं हो. आपको प्लान करना है कि मेरा एक क्वेश्चन 7 मिनट में, 8 मिनट में, 10 मिनट में होना चाहिए, इतना मार्क्स इतने टाइम में होना चाहिए. अदर यू हैव टू मूव. यू नीड टू आफ्टर एवरी 10-15 मिनट्स वॉच पे ध्यान देते रहो. वहां पे सामने वो घड़ी वाली वॉच रख देने की, हाथ में रखिए. दैट इज समथिंग विच इज वेरी मच नीडेड. दैट इज हाउ यू बाइफरकेट. एंड अदरवाइज क्या, हम फ्लो में बह जाएंगे और समझ में नहीं आएगा. करेक्ट? अभी ये चीजें कैसे यूज टू होती है? Mock test by the ICI, one of the 4 most important things. That is why I don't know how many of you have written already. First mock by institute is already conducted across the branches, in the month of March. Correct? For students giving exams in May. The second mock is already been announced, and in the month of April is there. अगर आपने पहली mock दी है, तो definitely you have to give second mock also April में. सिर्फ 3 घंटे लगते हैं. राइट है? एंड अगर आपने फर्स्ट मॉक नहीं दी है, तो आपको डबल डेफिनेटली ये सेकंड मॉक देना है.
what will happen is you will make mistakes at home or in ICI year only rather than doing mistakes in institute examination, final exam. तो गलतियां अपन यही कर लेंगे मॉक पेपर्स में, आपको समझ में आएगा कि आंसर्स कैसे लिखने हैं. सो माय हम्बल सबमिशन रिक्वेस्ट टू एवरी स्टूडेंट जिसका भी मे एग्जाम्स है, प्लीज राइट दिस मॉक टेस्ट जो अभी अप्रैल में होने वाला है. और अगर आप आपके यहाँ नहीं हो रहा है और एनीथिंग, आप वो पेपर डाउनलोड करके खुद घर से लिखें. But definitely write down. Students who have November exams, plan in such a manner that you are at least writing 2 to 3 mocks. Yes, you heard me correct. जब आपका पहली दूसरी बार पढ़ाई हो रहा है ना, तभी साथ साथ में मॉक्स लिखिए. तभी साथ साथ में मॉक्स लिखिए. नो प्रॉब्लम. कितना मार्क्स आ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है पहले स्टार्टिंग के मॉक्स में. आप रेप्लीकेट कुछ तो कर पाए, दैट इज इंपॉर्टेंट. रिमेंबर दिस. करेक्ट है? दैट इज ऑफ द utmost important. Now, in the 3.15 hours of examination, content से ज्यादा and content के साथ what is more important is your presentation skills. धड़ाम. लेकिन मुझे बताओ, अगर आंसर ही गलत है तो प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है क्या? कि बहुत सुरेख हैंडराइटिंग काट लिए, मोती के दाने काट ले, बट देर इज नो कॉन्टेंट, आंसर ही गलत है, मार्क्स मिलेगा क्या प्रेजेंटेशन का? वेरी गुड लक्ष्मी, नहीं मिलने वाला. करेक्ट है? तो फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट सही होना चाहिए, प्रेजेंटेशन भी सही होना चाहिए. तो बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट 1 आवर में जो अपने को अच्छे से आते हैं उसको ऐसा लिख देते हैं, तो उसमें प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं करते कि भाई चलो ये तो आता है, ये हो जाता है, तो फुल कॉन्फिडेंस होके. तो क्या हो जाता है, अगर आपको 40 मार्क का लिखा, उसमें से 35 आ सकते थे अगर अच्छे से प्रेजेंट करता तो, बट क्योंकि तूने अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया इसलिए 30 आया. लिखा तो सही सब, लेकिन प्रेजेंटेशन वॉज वेरी शैबी. तो क्या हो गया, मार्क्स गिर गए. एवरी पेपर कैन इंक्रीज 4 odd marks of presentation. Just give me 1 second. Correct? So every question, every paper can increase 4 to 5 marks of presentation, well, provided your content is correct. That is of utmost importance. So my humble submission is, अगर आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं जिसमें पॉइंटर्स लिखने हैं, करेक्ट, कि फॉलोइंग आर द सर्कमस्टेंसेस वेयर दीज आर नीडेड, तो ABCD करके लिखिए या 1 2 3 छोटा करके लिखिए, बट साइड में प्रॉपरली एक सेकंड मार्जिन बनाइएगा एंड मेक इट डाउन देयर. दैट इज ऑफ utmost important, right? That number, header, make sure your every pointer has a header. करेक्ट है? सर्कमस्टेंसेस आपने लिखा, लेट्स से इंक्वायरी, इंक्वायरी लिखिए, अंडरलाइन कीजिए इंक्वायरी को, एंड देन उसके नीचे 4-5 लाइन लिखे, देन लीव अ लाइन, पॉइंट टू ऑब्जर्वेशन, अंडरलाइन करो, फिर 4-5 लाइन लिखी, लीव अ ब्लैंक लाइन, फिर थर्ड वन, ऐसा करके डॉक्यूमेंटेशन राइट डाउन. अंडरलाइनिंग इज इंपॉर्टेंट सो दैट you are trying to show the examiner what you have written. Remember this. An examiner has to correct a lot of paper, as Pinky ma'am also rightly said to us, right? Now, earlier तो offline होता था, अभी online checking होता है. Scanner से papers get scanned and paper checkers correct online everything. So very utmost important, it should be very quickly visible to them also because it's on screen now. Correct है? So depending on सामने वाला बंदा कितना बड़ा screen, छोटा screen है, वो दिखने वाला है. So we have underlined, very specified those things becomes helpful. Correct है? A lot of theory questions which are case based. Make sure you give reference to case. Audit and law में अगर पूछा है, I'll show you some snapshots also of the papers जहाँ पे स्टूडेंट ने गलतियां करी है. Let's say अगर पूछा है AB company chartered accountants have done particular thing. इसके अंदर पार्टनर B ने ऐसा किया, पार्टनर A ने किया, एंड फाइनली एक क्वेश्चन पूछ के लिखा. स्टूडेंट्स क्या लिख देते हो, फाइनल जो आंसर है वो लिख देते, एबी एंड कंपनी का नाम कहीं भी नहीं लिखा, एंड में कंक्लूजन नहीं लिखा, तो क्या हो जाएगा, 4 मार्क के क्वेश्चन में आपको 2.5 या 3 मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, जबकि सेम क्वेश्चन में आपको 3.5 या 4 भी मिल सकते थे अगर बाकी चीजें करेक्ट होती थी. तो मीनिंग केस बेस्ड क्वेश्चन should always be given reference to the case, or that is utmost important. Are you with me? Yes. Are you with me? Okay. Do we have any questions related to what we are talking? I'm going to take up few questions also, which a lot of students had, stated. How to study efficiently in less time. How to study efficiently in less time is
Important is you should write down also. People who've got exams in November, थोड़ा लिख के पढ़ाई करो. That is how you study efficiently in less time, right? So what happens is your memory becomes little better, right? And ABC analysis करके करो. How to avoid distractions and retain the content study. Distractions क्यों आ रहा है? क्योंकि आप distractions को आने दे रहे हो. अगर मैं सामने, अभी लेट्स से एन एग्जांपल, आपका और मेरा सेशन चल रहा है, करेक्ट है? मोबाइल तो मेरे पास भी है, तो मैं अगर सोचो बीच बीच में ऐसा, ठीक है, अच्छा थोड़ा थोड़ा चैटिंग कर रहा हूँ, अच्छा हाँ ठीक है गाइज ऐसा होने वाला है और ऐसा, तुमको चलेगा क्या? इफ आई एम कंटिन्यूअसली ऑन माई मोबाइल चैटिंग ऑल्सो एंड टॉकिंग टू यू, आर यू ओके विद दैट? टेल मी येस और नो. आर यू ओके विद दिस? नो, राइट? एनीबडी एल्स? चलेगा तुमको? डेफिनेटली नॉट. तो तुम अगर पढ़ाई कर रहे हो बुक हाथ में और साथ में मोबाइल भी रख रहे हो, थोड़ा पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा रिप्लाई कर रहे हो, थोड़ा इंस्टाग्राम देख रहे हो, थोड़ा पढ़ाई करेगा, चलेगा क्या? बुक को बुरा लगेगा, बट नेचुरली जैसे तुमको बुरा लगेगा अभी, करेक्ट है? सो प्लीज एवरीवन, माय हम्बल सबमिशन एंड रिक्वेस्ट इज मेक श्योर दैट यू टिपिकली डू नॉट, करेक्ट है, कीप योर मोबाइल्स अवे. Fear of exams. I understand there are a lot of times we get fear and anxiety. Correct है? My presentation का last mode is still remaining. I'm just saying few questions which is a part of this. Fear and anxiety रहेगी. But naturally, how can a fear and anxiety be removed? One is, of course, you need to do, which you need to take breaks. Meaning हम उसको बोलते हैं capsule study. Do capsule study, take regular breaks. मतलब रेगुलर ब्रेक मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अपन ने पढ़ाई आधी घंटे की और ब्रेक 1 घंटा चल रहा है, करेक्ट है? आपने 2 घंटे पढ़ाई की, उसके बाद 10 मिनट ब्रेक ले लो, बट 2 घंटे की शिद्दत से पढ़ाई करो. हैव योर टारगेट एंड देन यू टेक अ 10 मिनट ब्रेक. थोड़ा घूम लो, फिर लो, फोन पे बात कर लो, दैट इज ऑल राइट, बट दैट 10 मिनट शुड बी स्ट्रक टू 10 मिनट्स ओनली. वेरी एसेंशियल, करेक्ट है? टाइम मैनेजमेंट पेपर वाइज राइटिंग पेपर आई हैव ऑलरेडी covered. Acha, can somebody ask, can our own language be allowed? Let us understand what is own language. A lot of students ask, अरे सर हम खुद के लैंग्वेज में आंसर्स लिखे क्या? मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय ओन लैंग्वेज? हमारी लैंग्वेज बनती कहाँ से? जो हम पढ़ेंगे वही तो आपकी लैंग्वेज बनेगी ना. रिमेंबर दिस. मुझे बताओ, आपकी लैंग्वेज, अगर आप ऑर्डिनेट लॉ पढ़ रहे हो, आपकी लैंग्वेज बनेगी कहाँ से? अगर आपने एक बुक से पढ़ा है, उसी से पढ़ा है, उसी से रिवाइज किया है, उसी का मॉक टेस्ट लिखा है, तो आपकी लैंग्वेज वही बन जाएगी. बट व्हाट हैपेंस इज, आपने उसको पढ़ा, ठीक से नहीं पढ़ा, ठीक से समझा नहीं है, और सिर्फ रट्टा मारा हुआ है, तो लैंग्वेज इज डिफरेंट. रिमेंबर दिस. आपने उसको अगर ठीक से नहीं पढ़ा है, देन योर लैंग्वेज इज डिफरेंट. अगर उसी चीज को, सो व्हाट हैपेंस इज देयर आर पर्टिकुलर वर्ड्स जिसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो ना. जैसे मटेरियल मिसस्टेटमेंट को मटेरियल मिसस्टेटमेंट ही बोलना पड़ेगा. यू कैन नॉट टेल समथिंग एल्स टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट, राइट? तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट वर्ड तो आना चाहिए, उसको अंडरलाइन. तो अभी उसके साथ में द, ऑफ, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, ऑल दैट इंस्टीट्यूट इज फाइन. एज फार एज द लैंग्वेज इज क्लियर, इट इज एब्सोल्युटली ऑल राइट. पॉइंटर्स ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 जो मॉड्यूल में थे उसी ऑर्डर में होने चाहिए, 1 2 3 4, अनलेस दे वर स्टेप्स, राइट? सो पहले आपने 4th पॉइंट लिखा है, 3rd लिखा है, फिर 1st लिखा है, 2nd, दैट इज ऑल राइट. बट अगर कोई स्टेप्स है, पहला 1st स्टेप करना पड़ेगा, फिर 2nd, फिर 3rd, उसको उसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा. So language is what you study only becomes your own language. So that question only should not arise. Okay. Now I'm going to be sharing my screen for the last, thing before we take up the question series. Not this one. Okay. Can you see the presentation? Is the presentation screen on your screen? Can you just tell me, can you see the presentation? Write down yes or no if you can see the presentation. Yes. Okay. Okay. Thank you so much. So, the last set of this part is the RRR of RCA exams. ये RRR मूवी कितने लोगों ने देखी है? Have you seen the movie? Have you seen the movie? कितने लोगों ने देखी है मूवी RRR? Have you seen? Yes, yes. काफी लोगों ने डांस स्टेप भी शुरू किया होगा, राइट? नाटू नाटू करा हुआ है, बहुत लोगों ने करा हुआ है. नहीं? अच्छा, इसके अंदर RRR का क्या था मीनिंग? राइज, रोर एंड रिवॉल्ट. करेक्ट है? आप खड़े हो जाओ, रोर करो, और फिर रिवॉल्ट में कन्वर्ट होएगा. अपन देखते हैं हमारे सीए एग्जाम्स का आरआर क्या होने वाला है. वन ऑफ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज
read. And when you read is read well. Even in exams, please remember, even in exams, read well. What happens is काफी बार बच्चे क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ते और वो एक दो शब्द होते हैं जो पूरा पासा पलट देता है, and then you don't read the question well. Very essential. Point number 2, revise. आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी है लेकिन उसको अगर पर्टिकुलर अच्छे से रिवाइज नहीं किया हुआ है, प्लीज नोट, इफ यू हैव नॉट रिवाइज थिंग्स वेल, तो क्या हो जाएगा, आपने उसको पढ़ पढ़ के अंदर दबा दी है लेकिन वो आपके इधर नहीं आ रही है. रिवाइज करेंगे हर बार तो वो इधर आ जाएगी. अगर कोई चीज आपको डिफिकल्ट लग रही है, कोई एक आधा सब्जेक्ट, राइट, तो उसको रोज 1 घंटा एंड में पढ़िए, नो प्रॉब्लम, विथ योर अदर रिविजन थिंग, एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम, राइट. सो दैट इज ऑफ utmost important. करेक्ट है. सो रीड, revise well. Very much needed is multiple times of revision and continual revision. Can you guess what is the third R? Read, revise. What is the third R? Repeat, represent, galat jawab. Let's see who is going to give the correct answer. What is the third R? Roar? Arey nahi. Definitely not roar. Or recall. Revise again. Pratiksha, good one. Revise again. But no, sorry guys, that's not the correct. Krishna, result. Relax, not really. You are little near. Shubh, you are little near to the answer. RTB. Shubh, very interesting answer. Repeat. I love the word RTB. Recognize. Okay. Right. Retain. Very good. No, that's not the correct answer. Anyone more? R say koi answers. Retain. Anybody else? What do you think? Remember. Okay. कुछ ऐसा जिससे आप पूरा रिफ्रेश हो जाओगे. किस चीज से रिफ्रेश हो जाओगे? कुछ ऐसा जिससे आप पूरे रिफ्रेश हो जाओगे इज, the answer is rest. That's why Shubh, when you said relax, I said you're a little nearby to the answer. The answer is rest. Relax. Yes. Not expected that. Exactly the point. Absolutely dear. Nobody expects that answer, but please understand, a well-rested mind gets you re-energized. A well-rested mind allows you to re-perform well. A well-rested mind allows you to put that roar once again. Meaning what? The sleep that you need should be very used to. मतलब अगले 1 महीने अगर आप 6 घंटे पर सो रहे हो, no problem, you will be able to survive with that 6 hours of sleep. Don't be like, अरे यार मेरे को तो 8 घंटे सोने की आदत है. ये 20 दिन में चेंज हो जाओ, कोई टेंशन नहीं, हो जाओगे, right? That is something which is going to be of utmost important. You will have to put across that. आज से, कल से शुरू कर लो. What? Put your planning in action. What happens if you rested well? Rest मतलब दोपहर को भी, as I said, do not sleep between 2 to 5. करेक्ट है. इफ यू वांट टू टेक अ 15 मिनट नैप, ले लो. 15 मिनट नैप से अगर आप फुल एनर्जाइज होते हैं, इट इंप्रूव्स अवेयरनेस, it increases concentration, right? It restores energy and it gives you a better memory. Yes, definitely. What happens is when you've rested well, when I use the word rest, it does not mean necessarily sleep also. Remember this, a sound sleep is important. लेकिन क्या हो रहा है, मतलब अगर आप, मैं यहाँ हूँ लेकिन मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है, अरे यार मेरे दोस्त वहां क्या कर रहे होंगे, तो ना आप यहाँ जस्टिस कर रहे हो ना वहां. करेक्ट है. काफी बार हम इधर भी नहीं होते और उधर भी नहीं होते, तो क्या हो रहा है, हम आधे इधर है आधे उधर है, राइट. अगर मुझे पता है मुझे आज आपके साथ सेमिनार लेना है, तो मेरा पूरा माइंड यही होना चाहिए, तो मैं पूरा मेरा 100% दे पा रहा हूँ. अगर मुझसे नहीं होने वाला है कि आज मैं अवेलेबल नहीं हूं, तो मैं कह दूंगा. करेक्ट है. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यू नीड टू बी विथ योर स्टडीज एट दैट पॉइंट इन टाइम. सबसे वेरी एसेंशियल पार्ट, and that is what is of utmost importance, right? Are you with me? Yes, no, no, yes. Are you with me? Lovely. I'm going to be showing you few type of answers of how well they have written, and how the institute has given them marks. Give me 1 second. I'm going to be sharing my screen. Okay, chalo.
Can you see this? E wala, right? So I'll just put out a question paper in front of you so that you can read the question first. Okay. Question number E. This is correct, incorrect. Can you read this question? The question says, the term analytical procedures means evaluation of financial information through analysis of plausible relationship among financial and non-financial data. पढ़ा ये question? Yes. Can you tell me it is correct or incorrect? Can you tell me it is correct or incorrect? Inter students? या आपको पैनल फाइनल वाले भी बोल सकते हैं. करेक्ट करेक्ट. लेकिन ये 2 मार्क का आता है. करेक्ट है, करेक्ट इनकरेक्ट 2 मार्क का आता है. 1 मार्क होता है करेक्ट इनकरेक्ट लिखने के लिए और दूसरा मार्क होता है टू गिव द रीजनिंग. अभी देखते हैं बच्चे ने क्या लिखा. ठीक है, बच्चे ने लिख दिया दी अबाउ स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज, और उसने पूरा सेम टू सेम डेफिनेशन लिख दिया. यू सी, उन्होंने सेम टू सेम डेफिनेशन लिख दिया. क्या कैन यू सी दिस? यस, नो, नो, यस. आर यू एबल टू सी? दिख रहा है बच्चों? यस. नाउ कितने मार्क्स मिले उसको? सिर्फ 1 मार्क. ये 1 मार्क और उसी का सब टोटल इस 1. 2 मार्क नहीं है, 1 + 1 नहीं है. ये 1 मार्क दिया. क्यों? ये करेक्ट का 1 मार्क्स दिया लेकिन इसका नहीं दिया. क्यों इसका नहीं दिया है? इसका क्यों नहीं दिया है? मालूम क्या इसका क्यों नहीं दिया? बताओ बताओ. क्योंकि उसने सेम चीज जो क्वेश्चन पेपर में है वो का वही आंसर लिख दिया एग्जैक्टली. कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि ये सही क्यों है. सो वन इज एज पर ऐसे लिख देता. वेरी गुड, कॉपी पेस्ट लिख दिया. तो क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट वाले का तो हम सही लिखेंगे और करेक्ट वाले का सेम टू सेम लिख देंगे तो इंस्टीट्यूट 2 मार्क देगी. ऐसा थोड़ी चलेगा. तो 1 मार्क जो करेक्ट है उसका तो दिया, बट ये सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करने का थोड़ी 1 मार्क मिलेगा. तो उसका कोई मार्क नहीं मिलेगा. आधा भी ऐसा नहीं होने कि भाई बेचारे ने बच्चे ने बहुत मेहनत से लिखा. इट डज नॉट वर्क लाइक दैट. बराबर है? तो what was needed was he had to give a correct explanation, right? He had to give us a correct explanation for that कि भाई रीजनिंग देना चाहिए था as per essay or whatever in that case में. करेक्ट है? Are you with me? समझ में आती है बात? Yes, I'll show you couple of more questions also of where the student could have gained marks and he had not written well. चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2A. गिव मी 1 सेकेंड. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2A पढ़ो फटाफट एक बार क्विकली. SN company chartered accountants appointed auditors of ABC as engaged partner has come across the following verifying equity share capital. He noticed that some of equity shares are held by promoters, some shares are issued as sweat equity shares. What is the meaning of sweat equity? What are the disclosure requirements of such promoters? मुझे बताओ क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट मेनली पूछना क्या चाहती है? What is the institute asking in the question? Can somebody tell me? Can somebody tell me what is institute asking in question number 2A? Anyone? 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 मेनली तो इंस्टीट्यूट ने पूछा है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स का डेफिनेशन चाहिए और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट चाहिए. तो इंस्टीट्यूट सिर्फ ये भी पूछ सकती है ना, ये 2 लाइन नहीं, ये इतना पूरा बड़ा केस बना के क्या देने की जरूरत थी? करेक्ट है, बट इंस्टीट्यूट ने प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है ताकि जब हम प्रैक्टिकली ऑडिट वगैरह करते तो समझ में आए, तो प्रैक्टिकली केस बना के दिया. ठीक है, बच्चे ने देखे क्या लिखा. I'll just make this little bigger so that you can see well. Okay. बच्चे ने लिखा sweat equity shares are the shares issued by the company for providing know-how at discounted price. Company cannot issue shares at discount except sweat equity shares. तो बच्चे ने for consideration other than cash वाला पॉइंट नहीं लिखा हुआ है फिलहाल. इधर डेफिनेशन में 1 मार्क दे दिया एंड promoters of ABC equity shares के कुछ पॉइंट्स लिखे उसने उधर भी 1 मार्क दे दिया, तो 2 मार्क दे दिया. इट वाज अ 4 मार्क क्वेश्चन. इज एनीवेयर द स्टूडेंट रिटर्न अबाउट दैट एस कंपनी, SNG कंपनी? कौन सा कंपनी था वो? SNG कंपनी था ना, सॉरी SN कंपनी, एंड एस एंगेजिंग पार्टनर था. क्या कहीं भी क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है ऐसा? यस और नो? एस के बारे में, या मुझे बताओ एस के बारे में या SN कंपनी के बारे में, हैज द स्टूडेंट रिटन एनीवेयर? नो.
तो ऐसा उनको इग्नोर करेंगे तो चलेगा क्या? इंक्लूडिंग देयर इज नो इवन कंक्लूजन लाइन, डू यू सी दिस? देयर इज नो कंक्लूजन लाइन, ये सब चीज का एक मार्क होता है, प्रोवाइडेड द मेन कंटेंट इज करेक्ट। तो मेन कंटेंट तो इसका सही है सब कुछ, एंड एक दो पॉइंट मिसिंग है, तो इसने 2 ही मार्क दिया। तो एक मार्क कंटेंट का कटा और एक आधा मार्क किस चीज का कटा? ऑफ थिंग्स दैट यू नो there is nothing written about that company. So please understand, whenever there is a case based question, Shubh, checker will always assume that reference is given to the company, but why is institute asked? The whole rule is that anytime a case based question is asked, you will have to write and present as per facts of the case, mention what is the case, and then write down what is the actual answer, and then write down the conclusion. That is how you have to write the answer. Of course, the reference, the checker has to assume that the reference is given to the said company only. आप कोई किसी दूसरे कंपनी के बारे में थोड़ी लिखोगे, आपको लिखना पड़ेगा ना. That is what is practically writing an answer. What do you mean by practical answers or practical questions or practical case-based studies? These are practically case-based questions, right? That is how you're supposed to write down. So my request to all the students, depending on audit, law, DT, IDT, anytime a case-based question, last line के SN company में ये हुआ to make guilty or whatever, that is very much needed. Are you with me? Yes? Very good. I'm going to come down with all your questions. Give me 1 second. I'm going to be showing you few more, things. And before we get to this, give me one thing again. Mm, 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 mm. Mhm. Okay, I think I'll show you another one paper to you. Give me 1 second. Okay, here it is. Can you see this? Give me 1 second. Okay, I've opened and kept. Very good. Question number 2A. Now, this question number 2A is a different attempt paper, not the one. You look at the handwriting. Is this great handwriting? Can you tell me? Is this very great handwriting? क्या बहुत ज्यादा अच्छा handwriting है क्या ये? Is this very great? This is normal handwriting. What I'm trying to say is this is normal handwriting, not very great. Meaning आपका कोई एकदम handwriting, great नहीं होना मांगता है. Normal handwriting है, चलता है. You see answer to question 2A कहाँ लिखा है? इधर बीच में, ताकि मिस ना हो जाए. उसको अंडरलाइन किया. The overall scope and nature of the audit objectives. अच्छा, what the following are the matters the auditor concerned developing overall plan expected scope of nature of audit objectives underline किया. The nature of reporting objective, communication, order कारो underline किया. Professional judgment underline किया. Preliminary activities underline किया. You see बाजू में marks दिए हुए. Audit procedures, materiality, legal environment. Now the auditor shall obtain an understanding of the legal environment of the entity. मुझे बताओ ये 9th point में, ये वाला में, 9th point में, what is the important word here? Legal environment. Do you understand? इसमें legal environment करेक्ट है. सो लीगल एनवायरनमेंट को अंडरलाइन कर दिया. प्लीज अंडरस्टैंड, इंपॉर्टेंट वर्ड शुड बी हाईलाइटेड. आइदर उसको पहले पॉइंटर की तरह लिख रहे हो या हाईलाइटेड. यूज ऑफ द एक्सपर्ट्स वर्ड. अभी दिस इज रिटन इन ओन लैंग्वेज. नो, यू सी हाफ मार्क दिया हुआ है. कैन यू सी दिस हाफ मार्क? यस. ब्रांचेस टू बी ऑडिट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दोस ब्रांचेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल. वर्ड ब्रांचेस इंपॉर्टेंट. 4 में से बंदे को 3.5 मार्क मिला हुआ है. कैन यू सी दिस? A lot of times we feel अरे थियरी में हमको मार्क्स नहीं मिलेगा. You get full marks definitely as well, right? Provided you have written all the correct pointers. Are you with me? Yes, no, no, yes. Everyone, are you with me? Yes? Can I get a yes or a no? Lovely, lovely, lovely. Give me 1 second. I'm going to show you few more. Okay. Where you see question number 2C, the components which provide a useful framework. फर्स्ट कंट्रोल एनवायरनमेंट लिखा, एंड देन उसके बाद ये पॉइंटर्स लिखे. रिस्क असेसमेंट लिखा, उसके अंदर ये पॉइंटर लिखा. यू सी विथ अंडरलाइन whatever is important, please you will have to mark and underline as a presentation. Correct है? Very important. I would want to just show you one more question paper answer sheet here.
Okay. So this is one of the CA final. As per provisions of Chartered Accountants Act 1914, a CA in practice deemed to be guilty of misconduct. ये वापस एक केस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? ये केस बेस्ड क्वेश्चन है. ओके, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है. सो केस बेस्ड में पूरा केस बना करके लिखने के बाद कैन यू रीड द लास्ट लाइन? Hence, in the given case, Mr. M is not guilty of professional misconduct. ये लास्ट लाइन का 1 मार्क या आधा मार्क मिला है बच्चे को. अगर ये नहीं लिखता वो लास्ट लाइन, तो वो आधा 1 मार्क चला जाता है. What is important is, you will have to always give end में conclusion. You will always have to give conclusion in the end. Let's look at the next question again. This is question number 6B and everything. In the given case, you see, L, a chartered accountant के बारे में लिख दिया, and end में is written Mr. L is guilty of professional misconduct. Meaning, my just humble suggestion to all of you is going to be, give me 1 second. Humble suggestion to all of you is going to be, अगर जैसे कि आपका पूरा प्लान इन अ मैनर कि यू गॉट एंड में लास्ट 10 मिनट्स, एंड जैसे 10 मिनट हो, आपका अगर कोई आंसर बचा भी है, एंड में 10 मिनट्स हो जाए, लास्ट के 10 मिनट बचे, 2 hours and 15 minutes exam done. Put your pen aside, pick up a pencil, underline important things very fast. 3 से 4 मिनट में खत्म हो जाना मांगता है. 3 minutes and you're flat down. Underline important things, and then अगर आपका पेपर वापस बाकी है कुछ, pick up your pen again and last में फटाफट, please agree, you'll all have to say yes or no. लास्ट के 5 से 10 मिनट में जो स्पीड होती है, वो स्पीड पूरे पेपर में कभी नहीं आती. लास्ट के 5 से 10 मिनट में जो स्पीड आती है, वो पूरे पेपर में कभी नहीं आती. Do you have to agree? Do you agree with this? Absolutely right. So no problem. Starting के वो तभी 3-4 में ऐसा ये चीज कर लो, and then what is important is going to be correct है. Take that across once again. Are you with me? Right? Very essential, those parts. So make sure you accordingly underline that part for 3 to 4 minutes and get back your pen and start writing again. सब स्टार्टिंग के 34 पेजेस अगर आपने लिखा हुआ है पेपर, और स्टार्टिंग के 20 में अच्छे से अंडरलाइनिंग प्रेजेंटेशन किया और लास्ट में नहीं किया, तो नो प्रॉब्लम. लास्ट के 2-3 आंसर में नहीं लिया है, नो प्रॉब्लम. दैट्स एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, राइट? Remember this, the presentation at that point in time is going to be of utmost importance. Let me just look at few questions which some students have sent. And yes, case study, how to write, I've already answered. Duration of time during the exam, I've answered. Super. So one thing that which I said, जहां section number अगर आपको आते हैं, audit law, anything, write down properly section number. Provision आता है, write down, right? That is going to be of utmost important. The last one, as I say, I'm going to give you a 5-5-5 technique. My 5-5-5 का mantra rule. The 555 rule says, after every 55 minutes of study, you can take a 5-minute break. 55 minutes of study, you can take a 5-minute break. After every 55 minutes of study, take a 5-minute break. That is in the 1 hour thing. उस 5 मिनट में फिर आप आराम कर लो, आप हेड डाउन कर लो, मोबाइल पे कर लो, बट वो 5 मिनट होना मांगता है एकदम टाइमर के साथ. वो 5 मिनट में रील्स देखते बैठ गए तो वो 5 ही 55 मिनट हो जाएंगे, बिकॉज रील्स तो फटाफट चलता रहेगा, राइट? प्लीज नोट दैट इज गोइंग टू बी ऑफ utmost important. With this, I would want to wish you all the very best, and I'm sure you've been amazing thing. And let's take some questions. If you would want to connect to me, post questions also. That's my number, and or you can definitely connect to me on Instagram or LinkedIn as well. How do you get to me on Instagram? If you're going to write down this name, Rudesh Pankhania, on Instagram, not very difficult to find me. I'm very active and happy to answer all your questions right there on Instagram or LinkedIn as well, or happy to, talk now as well. If you've got, I'm going to be taking, I think there are few questions which are coming down. We're going to take questions. Shubh has asked, what are the possible challenges which can be faced by students due to change in examination scheme and relevant change in syllabus, and also how to overcome such challenges? Very good. सबसे पहला, so there is nothing to worry if your
एग्जामिनेशन स्कीम चेंज होने वाला है, तो नंबर 1, करंटली इंस्टीट्यूट ने बोला है इंटर और फाइनल मई में तो करंट सिलेबस है, करेक्ट है। अगर नवंबर में, सॉरी दिस नवंबर तो करंट सिलेबस है, करेक्ट है। नेक्स्ट मई में अगर न्यू सिलेबस आता है, तो करंटली वी आर इन द मंथ ऑफ मार्च। टिपिकली जो नेक्स्ट मई में इंटर बच्चे जाते हैं, वो कौन से बच्चे जाते हैं? जो इस मई में फाउंडेशन देगा, जिसका रिजल्ट जुलाई में आता है, करेक्ट है। तो टिपिकली अगस्त से या जुलाई अगस्त से यू स्टार्ट विथ योर इंटर का स्टडीज। उसके पहले इंस्टीट्यूट से आ जाएगा कि नेक्स्ट मई के लिए इंटर न्यू सिलेबस होने वाला है या ओल्ड सिलेबस होने वाला है। सेम गोस फॉर फाइनल ऑल्सो। नाउ फाइनल के लिए भी देयर आर गोइंग टू बी ओनली 2 पेपर का जो डिफरेंस होने वाला है, सॉरी 3 पेपर का। वन इज कॉस्टिंग, वन इज लॉ जो इंस्टीट्यूट ने बोला हुआ है, एंड वन इज पेपर 6, करेक्ट है। बाकी 5 पेपर तो सेम है ना, तो वी कैन स्टडी दोस 5 पेपर्स। देयर इज नो चेंज इन दोस 5 पेपर्स का कंटेंट एज सच, सो यू विल हैव टू जस्ट डू दैट, डू नॉट वरी। There will be a cutthroat, direct changeover, but you will not have to worry because your content of FR, that is accounts, SFM, FM, audit, still remains same. Direct tax, indirect tax still remains same. Can we finish these subjects at least first? Uh, Anonymous participant, I make plans and follow for some days, but after a few days start feeling distracted and start wasting time. Talking at home with family members, other activity. Most important, जैसे ही आपको रियलाइज हो कि मैं वेस्ट कर रहा हूँ टाइम, stop there, make a plan again. You need to revisit the plan after every 4 days, 5 days, but do not stop making plans. You will have to revisit your plan. Sridhar Desai sir, regarding new upcoming theme for inter and final, the group, is the syllabus going to change with additional less chapter changes? What is the difficulty level of question paper? What if we can't choose the new scheme or it is mandatory change or stuff? इतना क्यों सोचना? श्रीधर, सबसे पहले if you are there in the chat box, can you tell me at which level you are in inter or final? And number 1, if you have somebody has a November exam currently, inter or final, just prepare for the current one. Do not think. Please understand, this has been proposed. अभी वो कब आने वाला है? इंस्टीट्यूट ने बोल दिया it is with government. Institute has said in its notification everywhere that it is pending for an approval. Now वो approval जब आएगा तभी आएगा. Please understand, institute is going to take care. Institute will give you enough time. कि भाई this is going to be the new scheme now. So if changes are there, first of all, what is going to be the change is already being given, correct है, in the syllabus structure which was given last year itself in the month of July. There are inter में couple of papers के चीजें बदल जाएगी मतलब उसमें edit होगा, correct है। बाकी your account still remain same, your direct tax, indirect tax still remain same, करेक्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और एफएम कॉस्टिंग ऑलमोस्ट स्टिल रिमेन सेम, कोई चेंज नहीं है, राइट। डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज गोइंग टू बी सेम, जो अभी है वही होने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं होएगा। वी कांट चूज द न्यू स्कीम और इज इट मैंडेटरी? इट विल बी मैंडेटरी टू चेंज द न्यू स्कीम डियर। ऐसा नहीं होने वाला आपके पास ऑप्शन होने वाला, इट इज जस्ट गोइंग टू बी डायरेक्ट। देयर विल बी, ये खत्म हो जाएगा और वो चलता रहेगा। सो यू विल प्रिपेयर द सेम वे। सम गाइडेंस अबाउट ऑडिट एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट फॉर फाइनल। As I said, audit and costing अगर आपका after November है, attempt next May में, don't study costing currently, or sorry, law, audit, but naturally write and practice. Right, audit I would suggest, important is write and practice and give mock test. One of the most important is writing mocks. There are some questions coming down in this also. Give me 1 second. Sir, I am in CA final में attempt is November 25. भैया November 25 बहुत दूर है, टेंशन मत ले. Should I study from now? और क्या लिखा है, 1 सेकेंड, अरे give me 1 second, this is not working. Should I study from now or wait for curriculum change? Dear, November 25 के लिए you don't have to start studying from now. First of all, we are currently in March 2023. I would say please wait for maybe couple of months and then maybe you can start studying. Even if you want to start studying, you can study FR, you can study SFM. Correct? You can study direct tax, indirect tax. But currently what I would generally study, would say is articleship अगर आपने अभी शुरू की है, correct है, who's got exams in this May, sorry, November 25, अभी आपने exams अगर आपकी शुरू करी हुई है articleship, तो थोड़ा enjoy your articleship also, learn practically things also, give time there, which I would say. So November 25 के लिए you have like more than 2 years, correct है. So I would say hold on. There is
I missed a question because there are a lot of chats coming in, so I may miss a question. How to do self-study? Very good. Self-study, how do you do a self-study is very simple, dear. Uh, जैसे एक बंदा क्लास जा रहा है तो उसका 7 to 10 मॉर्निंग में क्लास है या इवनिंग 6 to 9 क्लास है, सिमिलरली आपको भी वही समय में क्लास बैठ खुद से बैठ जाना है, मॉड्यूल लेना है, नोट्स बनाना है, पढ़ना है. That is how discipline is the only way that you can do self study. The way most important is your discipline. That is how you do self study, right? Is there any other question? I think there are a lot of chats in between, so I may have missed a question. अगर मैं मिस कर दिया हुआ तो प्लीज वापस भेज दीजिए क्वेश्चन. If I missed any particular question, please resend the question. Okay, sir, that was your question. Sir, I'm going to give inter exam in May 24. How should I start the study with old scheme or new scheme? Dear, अगर May 24 है तो इंस्टीट्यूट ने, if you see on its book portal also लिखा हुआ है that current is going to be scheme for November 23 only. So May 24 it is expected कि new scheme आएगा. So I would say please wait. Do not buy the new books is what I would say. आपको पढ़ाई करना ही हो तो किसी के फ्रेंड्स के बुक लेकर के आप subjects like once again accounts, FM, costing भी for that matter, tax, you can definitely study. How to stay energetic throughout 6 to 7 months of preparation? You have to love study. How do you stay energetic? जिस चीज में आपको पसंद आती है उसका हम हमेशा मजा करेंगे, we'll enjoy those things. So that is what something you need to do. So that is how you remain energetic and it is relay race, right? So थोड़ा थोड़ा करके करना है आपको. ऐसे नहीं कि भाई पूरा दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो, आपको 2-3 hours करना है पढ़ाई, फिर टेक अ ब्रेक, 2-3 hours टेक अ ब्रेक. यू हैव टू डू योर अदर थिंग्स आल्सो. यू हैव टू लिव योर लाइफ विथ योर स्टडीज. प्लीज नोट, ऐसे नहीं कि भाई आप जीना छोड़ दो. करेक्ट है? सो दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी एसेंशियल. Any more questions? How to prepare without coaching classes? I already said. Self study, pick up modules, pick up RTP, pick up MTP. Right? That is something very essential. There is something which is very essential. Oh, what would be the length of the answer compared to the marks provided in theory exam? Very good question here. Now, the length of the answer ऐसा नहीं है कि इतना होना चाहिए, but हम generally कहते हैं कि 4 to 5 marks के लिए one side is very basic. तो 4 to 5 marks का क्वेश्चन है तो वन साइड तो आपको लिखना ही होगा. 8 marks का है तो 2 साइड इज वेरी नॉर्मल. तो उतना होना चाहिए. अगर आपकी हैंडराइटिंग बड़ी है, प्लीज बीच बीच में 2-4 लाइन के पॉइंटर्स के बाद लाइन छोड़िए, लीव अ लाइन. एंड इफ योर हैंडराइटिंग इज स्मॉल, स्टिल लीव अ लाइन, तो ताकि स्प्रेड आउट दिखेगा. सो फॉर 8 marks 2 साइड, फॉर 4 to 5 marks 1 side or one side for 4 marks is normal, good enough. Any more questions? Let's look at if do we have more questions. When we should start preparing for CA final exam? Depending आपका CA final exam कभी है dear, but अगर आप self study कर रहे हो तो 1.5 year पहले you can start preparing basic stuffs and everything. And जैसे ही 1 साल बच रहा है उधर से full form में आपको आ जाना पड़ेगा. Sure. Any more question? Any more questions? Anyone? No more questions. Lovely. I think I would like to thank the entire, once again, the Vikasa and the all branch of Kolhapur, Sangli, Ichilkaranji, Dhule, and Satara for planning this entire session. I'm very glad. If you've got still questions, guys, I'm still here. You can write down or you can unmute yourself also and ask. Absolutely no problem. I'm happy to answer. I would suggest the Vikasa team also, if you've got any questions that you've received from the students, you can let me know. Over to Vikasa team. Yeah, one best advice you want to give us, which is your best learning from your own exam times. One best advice. Very good. Thank you, dear. The best advice that I want to give you, which is learning, is write tests. In my CA Inter, I did not write tests. I realized that. In my CA final, I wrote 1 mock test of every subject. मेरे को किसी ने बता नहीं था, that was self realization. तो आपको मैं बता रहा हूँ आज, you should write at least 2 full mock tests. At least 2 full mock tests. People who have got November or afterwards exams, at least 2 full mock tests. People who got
exams in this May month, May 23. अगर आपने अब तक मॉक टेस्ट नहीं लिखी है या लिखी है, ये अप्रैल के इसमें तो मॉक टेस्ट लिखना वेरी मच नीडेड है. कितना मार्क्स मिले वो इंपॉर्टेंट नहीं है. राइटिंग अ टेस्ट 3 घंटा प्रॉपरली is sitting with that mind frame like exam very much needed. So make sure that you write down. One of my best advice is that write down test, mock test, which is of utmost importance. 90% of students के लिए वो beneficial हो जाता है, 10% may not, because उनको need not be, right? But it will always help you to get prepared for an examination, to prepare for the worst, because your hand has to keep moving. That is what my best advice is. Thank you, dear. Over to you, Vikasa team. If you've got any questions, happy to take. Over to you guys. Thank you so much. I hope you had an excellent time, and feel free to connect with me on any of my, channel, right from an Instagram or LinkedIn. Pratisha, when 4 marks question, then 4 point is efficient or for full marks. So वो क्वेश्चन का आंसर जितना बड़ा है as per module you need to write down. ऐसा नहीं कि 4 मार्क के लिए 4 पॉइंट लिखने का. अगर उस क्वेश्चन का आंसर एज पर मॉड्यूल इज 6 पॉइंटर, देयर आर 6 पॉइंट्स, तो 6 के 6 लिखने पड़ेंगे, तब जाकर के 4 मिलेगा. दैट इज समथिंग गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट? सो ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच इज दैट बिग क्वेश्चन, बिग आंसर. अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका बहुत लेंथी आंसर है, उसका उन्होंने पॉइंट स्टेटेड करने के लिए बोला रहेगा, करेक्ट है? तो यू नीड टू राइट ओनली दैट मच. सो दैट इज इंपॉर्टेंट इज हाउ मच इज दैट एंटायर थिंग, right? Thank you so much, everyone, and feel free to be connected. Happy to share anything that need. Over to you, Vikasa. Thank you so much, sir, for sharing your valuable time with us, and we will keep your tips in your mind, tips in our mind. Now I request CA Praveena Oswal ma'am to share their knowledge with us. I guess she wants to talk with us. Yes, Praveena ma'am. Praveena ma'am, Vikasa chairperson of Satara branch. Thank you so much, ma'am, for being there. Ma'am, you're on mute. Acha, I think the admin will have to unmute ma'am, it seems. Can you please check? Yes. Thank you very much, Hridesh sir. You have explained it very well, and I remember my exam date. If at that time I got this guidance, then the result would be different. Yeah. Thank you. There is one query from a student that he is not really ready for the 2 group, but one of the paper of second group is he has prepared. So can he go for the paper of first group and only one paper of second group? So very rare it happens. So one is if he gives the entire group 1 and group 2 ka only 1 paper is planning, but he'll have to go and attempt at least the other 3 papers if he is looking for an exemption in that 1 paper only, right? Because an exemption will be awarded only if he at least appears in the remaining papers. I mean, he'll have to be present in the remaining 3 papers of the group 2, at least go over there. But then his 1 paper of group 2 needs to be exceptionally well to get exemption. So, every paper. So if that is, he's very much prepared, he can definitely do that, thinking that kabhi exemption can be met in that, but he'll have to appear for the remaining 3 papers only, then the exemption will be awarded. Please unmute Praveena ma'am. I think ma'am is on mute. Or can I unmute? I'll just check out. No, I cannot. Yeah, okay. Thank you very much. And also one question, if the student is appearing for first group, then should he join articleship after the first group clearance, or he should clear second group and then after he should go for articleship? No, I would generally suggest, ma'am, if somebody has cleared either of the groups, they should immediately start articleship very typically, because what happens is otherwise you're delaying your becoming of CA, for 6 months.
So I would generally advise is to start the articleship, because अगर हम ग्रुप 2 का पढ़ाई भी immediately जैसे ग्रुप 1 का एग्जाम हो जाता है, उसके बाद 5-10 days का somebody can 5-7 days का ब्रेक ले ले एंड ग्रुप 2 का पढ़ाई फिर शुरू कर देते हैं. So along with office, it is manageable with some leaves of last 1 month of leave before the exam, which a lot of offices would give also के दूसरे ग्रुप के लिए है. So then it is possible also to do up things. So I would generally advise a student to start their articleship on a normal scenario. I would generally advise to start the articleship. Unless, yeah. Please continue. Sure. So unless what happens a lot of times, a student is being के भाई second group का एकदम ही preparation नहीं हुआ है and exam and results के बीच में भी उसने कुछ preparation नहीं किया. Correct. So what happens is के बाद में articleship शुरू हो गया तो group 2 पढ़ाई करने के लिए जरा भी टाइम नहीं है. So in that certain scenario, students are like के हम नहीं कर पाएंगे. तो in that scenario it is okay. He does not start the articleship. इसलिए मैंने कहा कि जैसे ही ग्रुप 1 का एग्जाम हो जाता है उसके बाद 5-7 डेज का ब्रेक ले ले, थोड़ा सा फ्रेश हो जाए एंड तुरंत अगर ग्रुप 2 का पढ़ाई शुरू कर देता है तो बंदा कैन डेफिनेटली स्टार्ट द आर्टिकलशिप एंड देन मैनेजेस टू पास आल्सो ग्रुप 2 एट दैट पॉइंट इन टाइम. Yeah, thank you very much, sir. You have explained it very well. And Pinky ma'am also give a typical guidelines for the students. It is very beneficial session for the students before exams till they have 1 month to prepare for the exam. So they can plan accordingly. I am also grateful to Kolhapur Vikasa who has taken lead to arrange this session and give us opportunity to take the guidance of Hriday sir and Pinky ma'am to the students. Thank you very much, Kolhapur Vikasa. Thank you, Praveena ma'am. I think Sagar sir is also there. I think Sagar sir needs to. Yeah. Hello, Sagar sir. Hello, sir. All well. Thank you so much for joining in. Today, sir, as usual, fabulous. You have guided all the students just before the exam, and I assure on behalf of them they will rock this exam and get cleared in this exam itself. So all the best to all students. So I would like to present one share for you, Hriday sir. Yes, sir. एक शेर आपके लिए बोलना चाहूंगा मैं, आपके पर्सनैलिटी के लिए जो आप स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हो कि आया हूं तो कुछ ऐसा काम कर जाऊंगा, आया हूं तो कुछ ऐसा काम कर जाऊंगा कि हर अच्छे बुरे की खबर तुझे दे जाऊंगा, कि आया हूं तो कुछ ऐसा काम कर जाऊंगा कि हर अच्छे बुरे की खबर तुझे दे जाऊंगा. मैं वो संग तराश हूँ, संग तराश मतलब स्क्रिप्चरल आर्टिस्ट, मैं वो संग तराश हूँ जो पत्थर को भी बोलने का हुनर छोड़ जाऊंगा. क्या बात है. Thank you so much. Hriday sir is always fabulous, a rock star of WRC of ICI. Thank you so much for being here, sir. Thank you so much. Thank you so much. MOC. Thank you so much, Praveena ma'am. Thank you so much, Sagar sir. Over to MOC Vikasa team. Thank you so much, all of you, for joining us. Now I request Secretary Akanksha to give vote of thanks. Good evening, everyone. On behalf of Kolhapur branch of WIRC of ICAI, Vikasa Kolhapur, Ichalkaranji, Sangli, Satara, Dhule, and the entire organizing team, I want to give heartfelt vote of thanks to CA Pinky Kedia ma'am and CA Hriday Pankhania sir, who spent their precious time for gracing the session. Today we had the opportunity to hear your thoughts, and this is definitely encouraging us. Your thoughts have enlightened our minds and shown us a new path. Last but not the least, I want to thank WIRC and Vikasa WIRC for allowed us to conduct the webinar through Zoom meeting. Thank you. Now I request Vikasa Vice Chairman Sania Santani to take the charge. Hriday sir, actually we wanted to take a photo of all of our committee and all the students. I don't mind. I can come to Kolhapur to take the photo.
No, no. No, sure. In fact, everybody can switch on their videos as well, right? Yeah. All the students can please switch on their videos. Come on, everyone. Let's see. Let's give this webinar a very, amazing way that we feel that we are sitting next to each other. क्या बात है? I can see a lot of students sitting together also. क्या बात है? Everyone. फटाफट जहां भी हो, फटाफट वीडियो ऑन कर लो and let's click an amazing picture. Just a minute. Sure, no problem. You can just print screen. Okay, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, sir, and all the students for cooperating and attending all this lecture. Thank you so much. Have a good day. Thank you so much, everyone, and all the best for your examination. Everyone. Thank you. Thank you. Thank you.